यो फर्स्ट तो मैं था। फर्स्ट तो मैं हुआ करता था। क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है? What's up, guys? What is up? Thanks for joining the stream. How are you? What's going on? What is happening? What's going on? तू जो है उसे होश कहते हैं। यप, मैं होश हूँ। I am live right. What the fuck is this? Oh my god. Pero, pero क्या होता है? I have no idea. What's up? मलिकाए हिंद। यार तू मेरा हाय हाउ आर यू का जवाब क्यों नहीं देता? कोई खाना खाया बाहर से? नहीं यार, खाना खाया घर से। आ, मैं तुमसे पूछता हूँ क्या हाल है, कोई कुछ कहे ही ना। साला मैं पूछना बंद कर दूंगा तब खुश रहोगे तुम लोग। हाँ, let me just fix the chat real quick. There you go. um so लड़ाई लड़ाई माफ करो, कुत्ते की पॉटी साफ करो। uh Malika Hind, you're gonna look the same regardless. Born. I'm good. How are you? I'm not too bad. I'm all right. Thanks for asking. See, that's how you do it. That's a way to talk to people, right, guys? Yesterday we made history. Oh fuck. Yesterday we made history by I made history. You guys were just around. I made history by being the first one on the internet to eat a banana live. मैं सोच रहा था आज आई एम गोना ईट अ शुगर केन ऑन स्ट्रीम लाइव, मेक हिस्ट्री अगेन। बट मेरे ख्याल से एक वर्ल्ड रिकॉर्ड को कुछ टाइम तक तो रहना चाहिए। सो घर में मेरे शुगर केन पड़े हैं कुछ दिन पहले से। डिड यू जस्ट क्लिक योर नेक? यप। सो व्हाट? आई कैन नॉट डू इट एनी मोर दो, आई जस्ट डिड। Yeah. But you cannot hear it most of the times because noise cancellation. सिद्धू इतने शुरू में क्यों आ रहा है? सिद्धू भाई मैं नहीं बोला था। All right. What's going on? कुछ चल रहा है दुनिया में, ऑनलाइन दुनिया में। प्लीज़ नॉट द रियल वर्ल्ड बिकॉज रियल वर्ल्ड इज राइट नाउ टू मच, अ लिटिल टू मच, ऑलवेज टू मच। I'm done with the real world. Like, how about just games? How about we just play some games? Eat some sugar cane, play some games, है ना? Isn't that just better? Uh, yeah, nothing interesting. Look at Faridabadi discovers escapism. What is going on, dude? Come on, stop sending money. I mean, thank you very much, dude. Thanks for the money, Parth. साला नॉट नोइंग पॉडकास्ट। भाई कितना प्रमोट करता रहता तू अपने आप को? 4-5 लोग देख रहे हो तब भी प्रमोट करता है? हद है भाई। भाई साहब इतना प्रमोशन। ओहो। I'll just fucking remove this. तेरे पे बहुत पैसा आ रहा है पार्थ। एग्जैक्टली। एनीवेज, ओके, लेट्स गेट टू इट। लेट्स गेट टू द शिट। बिंद्रा ने कुछ भेजा, वेयर्स पीपल व्हेन यू नीड हिम, सिद्धांत का स्टेटस। ओके। Ludhiana Commissionerate Police busts an ISI Pakistan backed grenade attack module and arrest 10 key operatives of foreign based handlers. Preliminary investigations revealed that accused were in contact with Pakistan based handlers through 3 operatives based in Malaysia. Statement. What?
भाई क्या हो रहा है आजकल? आई थिंक मेरे ख्याल से फरीदाबाद में फिर से कुछ मिला है, किसी को पकड़ा है, समथिंग लाइक दैट। प्रमोट भी उन्हें कर रहे जो पहले ही जानते हैं। एग्जैक्टली। इन्होंने पॉडकास्ट कौन ए नए नए जिस पे डिफेमेशन केस किया। नीलेश को ऑकवर्ड करने का तरीका है सुपर चैट कर दो। नहीं नहीं, मैं ऑकवर्ड होता ही नहीं, करके देख ले। गलत है। I'll remove my socks if anyone sends money again. So you better not. I'll show my foot, because I'll just remove one sock. Actually, the reason I'm mentioning my sock because I like the sock I'm wearing today. मतलब मैंने आज जो जुराब पहनी है ना, I know this is not content guys, fuck you, but who gives a shit। जो मैंने आज मजाक करता सुपर चैट वाले यार, बट जो मैंने आज जुराब पहनी है, जब मैं ये खरीद के घर लेके गया था मैं जस्ट बाहर था एंड आई जस्ट सॉ दिस पेयर ऑफ सॉक्स and I just bought them, and nobody can ever believe that I bought these socks। अब तो ये बहुत साल पुरानी हो गई हैं, तो they look disgusting, but who gives a fuck। I'll show you anyways। How do I lift my, there you go। Nobody can believe that I bought these socks। I like them, right? Wait, there you go, now you can see them clearly। Damn, I like these socks। मतलब मेरे घर वालों से लेकर मेरे दोस्तों तक कोई यकीन नहीं कर सकता कि ये सॉक्स मैंने खरीदी है। क्यों इंसल्टेड दे रहे हो पार्थ को? नहीं नहीं, पार्थ इज नॉट इनटू माय फीट, दैट्स फाइन। नोबडी इज अनफॉर्चुनेटली। सदगुरु का कंपेटिटर सारा। Okay, anyways, I just wanted to talk about my socks, okay? Fuck you guys। There's nothing wrong with talking about one's socks। अपन यार पैरों की फोटो भेजे भाई। सदगुरु की फोटो कितनी कितनी पैरों की? सदगुरु फीट पिक। ओके लेट्स सी। मिंट ने आर्टिकल लिखा है इसके ऊपर, इंटरेस्टिंग। 3200 रुपये की है भाई। भाई यार क्राउड फंड करना है यार, 3201 रुपये की फोटो भेजनी है मुझे। मुझे 3201 रुपये की फोटो भेजनी है प्लीज यार। द फक। तो वेट, तेरे को पता नहीं था ये? वेयर डू यू थिंक ऑल दीज जोक्स कम फ्रॉम? डू यू थिंक इट्स जस्ट द फैक्ट दैट आई एम इनटू फीट? कम ऑन dude, that has nothing to do with the jokes here। Damn। By the way, you know what I love? 5-star reviews। One review। अनुभव मेरे भाई, मतलब हाउ डज इट फील टू बी द ओनली वन टू रिव्यू सदगुरु की फीट पिक? It is such an amazing picture। My heart is filled with gratitude। Amazing work Isha Life team। Really? Really? Your heart is filled with, all right। How big is this? And the photo? It is, size नहीं लिखा कहीं। I'm buying this, I need to know the size। ये यो bye। But this photo you can find in the section of yoga store, yoga accessories, yoga merchandise। Damn bro। अरे फ्रेम्ड फोटो का साइज जानना था, क्योंकि यहाँ सदगुरु जी की शक्ल की फोटो 250 रुपये की बिक रही है, तो उनके पैर की फोटो 3200 की क्यों बिक रही है? एंड भाई ये होता है कॉन्फिडेंस। इन्होंने ये भी नहीं लिखा 3199, इन्होंने लिखा है 3200 रुपये। जो है वो है भाई सदगुरु, एटलीस्ट से व्हाट यू बॉट अबाउट द गाय, जो है वो है। इट्स नॉट 3199, इट्स 3200। आई फकिंग सिडनी स्विनी बाथ वाटर, लेट्स सी हाउ मच दैट इज। क्या स्पेलिंग है उसका नाम? की सिडनी बाथ वाटर सोप है भाई वो। $215। व्हाट द फक डूड, व्हाट द फक, ओह माय गॉड। I don't know. I just don't find her that attractive। Is that weird to say? I'm not much of a Sydney Sweeney guy।
Yeah. I just I don't see what's the big deal. क्या हाल है हितेश? A long time no see, dude. How are you? Amber Heard. Amber Heard. Amber Heard का होता तो अभी ले लेता. EMI पे. And I don't see the big deal, honestly. I don't know. Maybe I'm weird. I don't know, dude. और ये अचानक से ही सारे इसका वो हाइप नहीं हो गया? How do you like Amber Heard and not like Sydney? I mean, गलती से X लग गया सामने. Sorry, it was an honest mistake. Well, now she looks weird, right? She used to look really good. Um, See, and now you just because the entire world hates her, so you find horrible, horrible, horrible photos. Like, look at this. यहाँ पर she looks like Taylor Swift. Like, can anyone look as bad? Euphoria में थी वो? Okay, I have no idea. I'm fine. How's your health now? It's okay. Not too bad, dude. Not too bad. Could be worse. Huh. So because the whole world hate her, you find weird photos of her now. But yeah, I can't even differentiate. What? You racist? That's racist, man. You're a racist. Amber Heard and Elon Musk. When these two are dating, see, there you go. Look at her. Come on, dude. Okay, she is much more of a party girl, I guess. Or maybe it's the fact that she punched Elon Musk in the face. I mean, that's what people say. Why am I comparing girls on stream? What is happening? Oh my god. But yeah, Amber Heard any day. Come on, what are we even talking about, dude? What are we even talking about, dude? Come on. Just look at her. All right, and look at this. Come on. ना नीलेश भाई को क्रेजी चिक्स पसंद है बस. ट्रू, दैट्स एब्सोल्युटली फकिंग ट्रू. डूड, ओ माय गॉड, मैं तुमको बता नहीं सकता भाई. मैं ना ओए होए 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 मैं आज वो देख रहा था. तो आजकल ना मैं कुछ टाइम से रिएक्शंस देख रहा हूँ, लाइक ऑफ द शोज दैट आई हैव ऑलरेडी वॉच. सो आई एम वाचिंग रिटार्ड्स ऑन यूट्यूब वॉच दो शो एंड गिव देयर टिप्पणी. ओहो, आई वाज वाचिंग दिस गर्ल वाचिंग शेरलॉक. ओ माय गॉड, इतनी नफरत हो गई उसकी एक वीडियो देख के मुझे. बिकॉज शी, दैट गर्ल इज सच अ फकिंग नॉर्मी इज द वर्ड, आई डोंट नो व्हाट इज द वर्ड. लाइक गुड कैरेक्टर्स उसको बहुत पसंद है, बुरे कैरेक्टर्स उसको बहुत बुरे लगते हैं. लाइक व्हाट इज रॉन्ग विद यू, you fucking piece of shit. I started hating her just by watching one video. I'm like, oh my god, there's nothing weird about you. You know, have you seen that do something Joey Diaz wali clip? Yes, I like girls like that. I like girls like that. मतलब जैसे ये like that's my issue. A lot of these normie chicks, they don't do anything. There's nothing weird about them, right? Listen to this. What works to me is you got to do something. You ever meet somebody that don't do nothing? You ever meet somebody that don't do nothing? They don't do nothing. Like they don't date. They don't do drugs. They don't play checkers. They don't do nothing. How long do you like those people for? You don't. Exactly. I like people with a little bit of edge to them. Yes. You got to do something. If you tell me I don't like alcoholics, but I love heroin, I'm in. If you tell me you suck toes for breakfast, I'm in. You got to do something. 100% on board. I'm 100% on board with this. You gotta do something. There has to be something weird about you. Otherwise, क्या? You're boring as fuck. सबको इक्वली देखती है ये मलिका और खुद को नीचे. ओह ओके ओके ओके, दैट्स नाइस. जब तक इनको बेड क्या बेड टी नहीं मिल जाती, इनकी आंखें नहीं खुलती. क्या मतलब? Play her video here so we can also hate her. No, I'm not gonna play her video. Oh, I fucking hate her so much. इसलिए मैं बच्चे खाते. There you go. Lisa Hannigan और Damon Rice, क्या कलेश है? I have no idea. Never got into the story that much. Never got into that much. तेरी बात मुझे कतई समझ नहीं आई. But yeah, absolutely, people do fucking nothing. You gotta have something weird about you, dude. Like, I was insecure. I did magic. Okay, I don't do. I drink cold drink more than I drink water.
I have some weird shit about me. Let's not talk about kinks. I watched Sadhguru's feet online. वो टेटे बोलने की कोशिश कर अबे एंड टेट बोल देता ना। जब तक इनको टेट नहीं मिल जाती इनकी क्या। अब तो और भी नहीं समझ आया मेरे को। मैं फिल्म दिस सैटरडे नहीं, दिस सैटरडे वी आर डूइंग वॉच पार्टी ऑन डिस्कॉर्ड, सो इफ यू वांट टू जॉइन वी आर वाचिंग द मूवी। पार्थ बताएगा, मैं ही बता देता हूँ डेव डी, बिकॉज आई रिमेंबर, बिकॉज आई केयर। तो हाँ, डिस्कॉर्ड पे वी आर डूइंग द वॉच पार्टी। आई शुड एक्चुअली कमेंट इट और पिन इट। डेव डी वॉच पार्टी ऑन डिस्कॉर्ड। टाइम अभी सोचना है, तुम बताओ किस टाइम। प्रिफर्ड की स्पेलिंग क्या होती है भाई, मैं अनपढ़ हूँ, डज एनीवन नो? ओ शिट, अब तो मैं कर भी नहीं सकता पिन उसको, मैंने गलती से एंटर ही कर दिया, फक मी। इट्स फाइन, डजंट मैटर, इट्स फाइन। बाय द वे, यस डीवीडी नहीं देखी मैंने भी नहीं देखी। अमेजिंग। हाँ मैं डबल एफ डाल रहा था डबल आर की जगह, यू फकिंग रिटार्ड। ओके एनीवेज, टिक टिक बूम की भी कर लो, मेरे देखने का मन है बट टाइम नहीं मिल रहा। ओह तो साले वैसे ही आ गए जैसे तो लास्ट वॉच पार्टी में नहीं आया था। वॉच पॉटी क्यों निकलता है मेरे मुंह से? लेट्स जस्ट कॉल इट वॉच पॉटी नाउ ऑन, फ्रॉम नाउ ऑन। वॉच पॉटी, राइट? दैट्स फाइन। नहीं, बट देन इट्स लाइक वी आर शिटिंग ऑन द मूवीज दैट वी आर वाचिंग, सो वी कैन नॉट डू दैट, राइट? वी कांट डू दैट। This was the girl. This, oh my god, she's in my, yeah, I recommend it now. This was the girl. I'm gonna show you. This was the girl. I told you I'd do the movies. You never believe me. Half of what I say is. I hate you. Oh my god, I hate her so much. Oh my god, I hate her so much. हेलो दोस्तों। चुप रह, चल। गलती से क्लिक हुआ वैसे भी। वॉच शीट हो गया ये तो। ट्रू। एनीवेज यार, से दोनों कुछ भेजा है। अरे ये वही है क्या? नहीं, एआई है, एआई तो है, लेकिन ये बंदा कौन है? बंदा क्यों नहीं ध्यान आ रहा मेरे को? Kill me, kill me, kill me, kill me, kill me, kill me. You have to fucking log in to open someone's profile. Are you fucking kidding me? Someone's public profile, that is. टट्टी था, टा टी का मतलब रेफरेंस था Amber Heard pooping on bed, hence. Dude, she looks like that. She can poop where the fuck she wants. I mean, on the property. All right, fuck you. Arvind mera sathi. Oh, okay. Are you fucking kidding me? You have to log in to watch public shit on Instagram. पहले आपने हमारी दवा खाई थी, कितना % ठीक हो गए थे? सर 60-70% सर ठीक हो गए थे। हाँ जी सर। हाँ, तो आपको दवा बीच में नहीं रोकनी चाहिए थी। खैर, अच्छा ताकत आने लगी थी। Is the guy masturbating while talking to him? Is that what is happening? Guys, time बताओ जल्दी से, time बताओ. I think I was thinking more like 8 p.m. or so. बताओ तुम लोग. Nilesh would see drop dead criminal man and would go like, let this dude be, and then see a woman absolutely doing nothing and then start hitting on. You are such a horrible, horrible person, and worse than that, a liar. You are a liar, Malika Hind. You don't deserve the title. It's good you changed your name, and it's good YouTube changed the policies so that now we see horrible shit like the greatest 2842. What the fuck is that? It's so good. 6 बजे is good, I guess. चलो 6 p.m. everyone. 6 p.m. yes or no? बल आने लगा था, उत्साह आने लगा था। अरे ये खुद is he gonna start masturbating himself? हाँ जी सर। और कितने साल हस्तमैथुन किया था आपने? Oh, they're talking about. Oh shit, man, I had no idea. They're talking about masturbation. सर लगभग 9 साल 10 साल सर। एंड अभी भी कर रहा हूँ सर। साल हस्तमैथुन किया, 2 महीने आपने हमारा ट्रीटमेंट किया तो 60% 70% ठीक हो गए थे।
ये कैसे काउंट करोगे तुम 60%? लाइक अब मैं 70% मास्टरबेट नहीं करता, लाइक व्हाट? हाउ डू यू कैलकुलेट दैट नंबर? हाँ जी सर। लेकिन कोर्स बीच में छूट गया था। Yes, I couldn't hold it any longer. तो बीच में छूट गया। 6 to 9 चलेगा? You mean 6 p.m. right? Parth भी 6 p.m. कह रहा है शायद। हाँ। Oh, dude, he's doing it right now. ये गड़बड़ हो गया। चलो दोबारा से कोर्स चालू कर लो, ठीक है? और ठीक हो जाओगे, आप बीच में मत छोड़ना कोर्स, ठीक है? ठीक है सर। भाई सर तू करवा रहा है उससे मेरे भाई। कोर्स फेल नहीं हुआ, फॉल हुआ था। बीच में छूट गया भाई। अच्छा तो इसका पूरा कंटेंट ही मास्टरबेशन को लेके है, जिसको हिंदी में आई डोंट नो, मैंने अज्यूम कर लिया वो जो उसने बोला था हस्तमैथुन, क्या बोला था? I'm assuming that's masturbation because it seems like he was, grabbing on to something down there. Course, okay. ये गुनिंग क्लासेस, गुनिंग क्या होता है यार? मैंने सुना है ये शब्द, मेरे को मतलब नहीं पता इसका। हस्तमिथुन हस्तमिथुन बस यही कचरा देखते रहो। चुप रह तू, तेरे को क्या पता? डीवीडी देखेंगे हम तो 6 बजे सैटरडे को। Hello, Hume Sahiba. How are you? Thanks for joining the stream. We're just talking about Hastmithun. Sorry, Hastamithun. 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 Okay, that's how I'll remember it. Hastamithun. इतना बुरा था, हंसी आ गई। Fuck you, Instagram. चित्रकला मतलब ह्यूम सैटरडे को 6 बजे शाम को वॉच पार्टी डीवीडी। जैसे हम कोई काम करते हैं ना तो मन नहीं लगता, तो उससे हमारा अध्यात्म कमजोर है, इसलिए हमारा मन नहीं लगता, हमारा ब्रह्मचर्य कमजोर है। आध्यात्मिकता जीवन की आध्यात्मिकता, लाइक ही रीड्स लाइक मी। मंदिर के आउटसाइड पर होता है ना मिथुन चित्रकला। ओह आई डोंट नो। हस्ता मिथुन तो कुछ और ही होता है। बिगाड़ रहा है तेरे को ये मलिका। ब्रह्मचर्य पर टिकी है। Wait, what? Hold on. Andra, you don't know what the fuck you're talking about, dude. हस्तमिथुन से चित्रकला टैलेंट तो होगा। I don't know what the fuck are you guys talking about now. लेकिन जो अध्यात्म है, जो ये क्या कर रहा है, वो ब्रह्मचारी पे ही टिका है। जब तक हमारा ब्रह्मचारी पुष्ट नहीं है, हमारा मन कभी भी किसी पर टिक नहीं पाएगा, लग नहीं पाएगा। Okay. यह केवल एक नैतिक अनुशासन मन नहीं बल्कि लगो मेरा यार गरीबी में, मन लगो मेरा यार हस्तमिथुन में। ये वो है ना जो निप्पल हिलाता है। What are you? क्या? नहीं 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 नहीं, तो क्या पागल हो गए तुम लोग? वो हस्तमिथुन करने से मना करता है इसके कंटेंट में, आई थिंक। Can you not see how, like, do you think ये अपने निपल्स हिला पाएगा? Dude, what are you talking about, dude? Come on. Really? You think वो हिला पाएगा? वो नहीं है ये, वो तो इन्वेंटर था ना, संजय शर्मा। संजय शर्मा था, क्या था? मतलब लॉयल रहने के लिए सेक्स नहीं करना। हाँ है, हाँ क्या मतलब? एआई नहीं है ये, एआई नहीं है भाई, हस्तमिथुन ना करने का नतीजा है। आज इतने साल बाद पहुंचे हैं हम ऑन द राइट साइड ऑफ द ट्रू। फाइनली आई थिंक दिस इज द एंड ऑफ द स्ट्रीम, दिस इज द क्रेशेंडो, वी आर ऑल गोना क्लाइमैक्स टू। वो नहीं है ये एडिटेड फोटो भी नहीं है। तुम लोगों को पता ही नहीं ना लाइफस्टाइल। देखो भाई इसके पोस्ट देखो, तेरी माँ की आंख इंस्टाग्राम, इसके पोस्ट देखो ना भाई के।
राधे राधे, जय हिंद सर। अरविंद ये चौहान देखो। बोल रहा हूँ, कैसे हो आप? नमस्ते, ठीक ठाक, आप राधे बताओ। राधे सर। अच्छा, नमस्कार सॉरी। सर। नमस्कार। हाँ भैया, मेरे मैनेजर ने बताया कॉल लेने से पहले कि आपका स्पैम काउंट की प्रॉब्लम है। स्पैम ओके, सॉरी सॉरी, ओह माय गॉड। आई एम नाउ, एक सेकंड, अभी मैं हंस रहा था क्योंकि मैं इसको एज अ मीम ले रहा था, बट वो बंदे को शायद सच में कुछ दिक्कत है और वो इसको फोन कर रहा है। दैट्स नॉट गुड, दैट्स नॉट गुड। आपका कम आ रहा है, कितना परसेंट आ रहा है स्पैम? सर ये खुद कंफर्टेबल नहीं है मेरा भाई बात करते हुए इस बारे में। चेकअप कराए तो 25% मतलब नोबडी ब्लिंक्स द वे ही इज ब्लिंकिंग। एक एवरेज ब्लिंक रेट कितना होता है, 100 के आसपास? नहीं, दैट्स अ बिट मच। आई थिंक इट्स अराउंड द हार्ट रेट ओनली, राइट? एवरेज ब्लिंक रेट, एवरेज blink rate. This is definitely faster though. Oh, it's much lower. Oh my god, it's much lower. मैं तो इसको थोड़ा सा नॉर्मल समझ रहा था। जवाब दो मेरा। I want to know क्या कैसे पहुंचे इसके पेज पे? सिद्धू, सिद्धू, look at his blink rate. He's not comfortable talking about this. क्योंकि जैसे ही okay, here's a body language expertise for you guys. Listen, watch this. जैसे ये बोलता है ना कि तुम्हारा स्पर्म काउंट कितना है, look at I'll show you a couple of things. जी, राधे राधे, जय हिंद सर। अरविंद चौहान बोल रहा हूँ, कैसे हो आप? अभी तक एक ब्लिंक आया सिर्फ, नॉर्मल बात पे, ठीक है? एंड he seems comfortable so far. राधे राधे सर। Okay, नहीं, he just blinks a lot. Okay, sorry. नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ भैया, But look at him now. मेरे मैनेजर ने बताया कॉल लेने से पहले Look at him. कि आपका स्पैम काउंट की प्रॉब्लम है। स्पैम आपका कम आ रहा है, कितना परसेंट आ रहा है स्पैम? Look at the blink rate कितना ज़्यादा बढ़ गया है। जॉ क्लिंच करके he'll swallow. That's what we do when we are uncomfortable. We just swallow. Okay. सर You see the swallowing motion right there. उसके बाद जैसी बात शुरू करी थी, he started fidgeting his finger. He's not comfortable. कराए तो 25% मतलब जो सुबह में जिंदा बताया कम से कम 60 75-80 होना चाहिए, 60% से तो ऊपर होना ही चाहिए, है ना? हाँ सर। हाँ तो तो शादी को एक कितना बार टाइम हुआ आपकी? 1.5 साल हो गया सर, 1.5 साल। 1.5 साल No one is. What the fuck are you talking about? He's fixing the guy's sperm, dude. You should be interested. हो गया। तो शादी से पहले हस्त मैथुन कितने साल किया था आपने? कभी कभी करते थे सर, ऐसा नहीं कि डेली करते थे, कभी कभी करते रहते। सही बताइए। मतलब 10th में जब हम थे ना सर, हाँ तो 10th में किए थे 1.5 साल। ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, मेरा भाई कितना खुश है, कितनी खुशी से याद कर रहा है वो दिन। मेरे भाई, इफ यू वर ओके विद योरसेल्फ, इफ यू डिडंट हेट योरसेल्फ, तेरे पास ऐसी फॉन्ड फुल मेमोरीज और भी बहुत ज्यादा होती। वो देखा, बताते हुए कितना खुश हो गया। 10th में एक बार किए थे सर। भाई, यू कुड हैव डन इट सो मच मोर। बट ऐसे लोग आके रोक देते ना, कैसे कैसे कर रहा है। सॉरी, मतलब 1 साल झूठ। क्या मतलब झूठ? नीलेश को तो पता ही होगा what people do when they get uncomfy. I don't even get the implication here. I don't get what you're trying to imply. ऐसे ही बनेंगे जब हम हस्ता मैथुन करना छोड़ेंगे, फिर 1.5 साल 10th में किया, उसके बाद शादी से पहले वो टोटल कितने साल किया होगा? किसी और का शादी से फोन। पहले वही 1-2 साल रखिए ना सर, 2 साल। अच्छा चलो, 2-3 साल किया है। हम्म। तो आप अरे फोन काट दे दूसरे का। तो शादी से पहले ये समस्या हो रही थी, जैसे कि नपुंसकता, हड्डियों में दर्द होना, गांठों में दर्द होना, पैरों में दर्द होना, चक्कर आना, कमजोरी, वीकनेस, नहीं सर, कुछ भी थकावट? नहीं, कुछ भी। ये सब तो मेरे को भी है, नापुंसकता नहीं है बस। You never know. His content is nonsense and people like him shouldn't exist on the internet. No, it's true. His content is real. He's a scientist. कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा अच्छा, देखो हमें कुछ वैसे पता भी नहीं था। हमें कुछ अगर हम बाली उम्र में अपने वीर्य धातु को नाश करेंगे बेवजह अपने मजे के लिए, या गर्लफ्रेंड आदि में कहीं पे ऐसे चले गए, उसको वेस्ट कर रहे हैं, तो वो जो वीर्य है वो परिपक्व नहीं हो पाएगा, वो पक नहीं पाएगा। अच्छा, पता नहीं था ना हमें सर, वही तो। मैं वही बता रहा हूँ आपको कि जब वो पकेगा नहीं, तो पकने के बाद में जो शादी के बाद में जो आपकी क्रिया के लिए पक के जो वीर्य तैयार होके जो गर्भ में जाना चाहिए,
और उससे जो संतान बननी चाहिए वो नहीं बन पाती है फिर। अच्छा अच्छा। डॉक्टरों से आपका ये कंफर्म हो गया कि जो मैडम है आपकी उनको प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ आप ही को है? हाँ अभी तक तो ऐसा कोई डॉक्टर तो बताया नहीं। Okay, I don't want to hear about his wife. All right, calm down, dude. The fuck, dude? Honest आदमी. I shared a reel on Discord. अभी देखता हूँ. What the fuck is this, dude? Fuck you, dude. Fuck off, you fucking piece of fucking piece of piss. Cooking होता है, ये कौन सा science है? अरे, what the fuck, dude? Again, this guy? वाले और हम देसी घी दूध मट्ठा पीने वाले, आजा 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 आजा। I don't even care about the context with her making that reel. Just ये बंदे ने मेरे को uncomfortable कर दिया यार. इससे अच्छा dating app चला लो. Wait, you क्या लग रहा है? What do you think? I mean, why do you think? Why do you think I'm watching this guy for dating? Shit. You think that's why I'm watching the guy? Trapped by loans. That's serious stuff. ये सिद्धू ने भेजा था चुतिया. 20,000 से तो शुरुआत के लिए That's serious. But we gotta take. आपके नए नए शौक आप जानो. हेलो सुमन, क्या हाल है? थैंक्स फॉर जॉइनिंग स्ट्रीम बड़ी. मलिका हिंद भाग गई विदाउट टेलिंग मी व्हाट द इंसिनुएशन वाज सपोज्ड टू बी हियर. ओह माय गॉड. वेट. Dave D watch party. Wait, Saturday. Hold on. What is the date on Saturday? I got things to do, guys. I got calendar कहाँ होता है मेरे phone में? That's how you know how busy I am, because I don't know where the fucking calendar is. Oh my god. Yeah, I should be free on Saturday. Yeah. Watch party. Saturday. 7 कर लो यार, 6 मत करो. 7 PM 7 PM on Discord. 7 PM. ठीक है. अगर किसी को वो है तो बताओ मुझे. किसी को कोई प्रोटीन से वो वैसे भी टूट जाती है, पीपो भैया ने बोला था. हाँ ठीक है ना. There you go, Hume. Up top, high five, Hume. Oops. It was slap if you didn't raise your hand up. ना भेजो यार. यार, dude, why do you hate people so much who are doing good in their lives, Bindra? I don't get it, dude. I don't get it. क्या देखना था? Fuck. Oh, P-boy. बॉलीवुड का गंदा सच. P-boy is boring now. P-boy is boring now. P-boy is boring now. P-boy अब कोई बात ही नहीं कर रहा पते की. Like आज तक इसने कार्ड भी. He never made the card appear. He just edged me so far. Gorzo. Oh yes, where is Gorzone? Malika Hind, if you were here, why don't you tell me what the insinuation is supposed to be? अच्छा, very sad review दे दो जल्दी. Hume, it's as you can see, YouTube के overall views down चल रहे हैं. You see, Poi के भी जब -46% हो गए तो मेरे तो -99% है. तो that's why it's taking a loss. Company is under construction and loss and tariffs and deficit, है ना? मैंने कहा हिंद ऐसे ही साइड हॉबी. क्या बोल रही है? नहीं. You said नीलेश को तो पता ही होगा what people do when they get uncomfy. What was the insinuation there? What were you implying? YouTube की विजय में exactly, you know,
In this channel only. Yes, this is happening. The maid who works in my home has taken a loan from an unorganized money a lender charging 10% interest. Oh my god. See, people don't understand how interest works. That's the worst thing. और भाई educated लोगों को भी interest समझ नहीं आता ढंग से शायद. मुझे ऐसा लगता है अब. That's the most fucked up thing. Fucked up thing. Fucked up thing. People just don't I don't think people can comprehend how it works. Kama Sutra theme based resort. And then you ask me why I like this guy so much. And then you make people uncomfy. इतनी maths करने की जरूरत नहीं थी. Wow. So your joke didn't make any sense. All right. Your joke very well. True. What do you think about Red Fort blast? Sad, shouldn't have happened. Yeah, that's how much I think. That's my level of comprehension of the topic. Hello, Shavya. How are you? Thanks for joining the stream. तो भाई अभी अपन आ गए चतुर्भुज लावण्या में. ये इनकी सबसे प्रीमियम सेगमेंट है और बेसिकली क्या ये रूम ना कामसूत्र की थीम. इसकी वैल्यू बताओ आप थोड़ा. हैं? 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1. Yeah, see, I was right. Do you think there will be another blast? I hope not. God, I hope not. Can we just watch Corazon? Well, there's one thing. तो भाई अभी अपन आ गए चतुर्भुज लावण्या में. ये इनकी सबसे प्रीमियम सेगमेंट है और बेसिकली क्या ये रूम ना कामसूत्र की थीम पे बना और फैंटेसियों के ऊपर बना. तो आप यहाँ पे जितनी भी अपनी फैंटेसी पूरी कर सकते हो. राउंड बेड है. Wait, what? तुम अपनी कोई भी फैंटेसी पूरी कर सकते हो. What? What? I don't see anything इस रूम में so far जो कि मेरी फैंटेसी पूरी करेगा. By the way, just to lay it out, just to let you guys know without telling you guys about any of my kinks. I don't see anything here. ये कैसे पता बे तुम्हें? The factorial thing. I don't know. I just made a guess. वारानी दिल जीत लिया. अजीब बात ये है कि जितनी बार मैं सोचता हूँ इससे चुतियापा क्या ही कर लेगा ये आदमी, मेरी एक्सपेक्टेंस की पर छत फाड़ के निकल जाता है. अजीब बात है. मुझे हैरानी भी नहीं होती. Yes, many people don't understand the difference between fixed interest rates and reducing interest rates. Some of them even work in banks, surprisingly. I'm not even saying that. I'm saying that how you end up paying the interest. People don't people don't really consider it कि मैं actual में उतना पैसा दे भी रहा हूँ. People just think of it as हाँ monthly इतना देना ना निकल जाएगा. People don't even do the calculations. Trust me, I've seen those people. पोल क्यों है कमरे में? I have no idea. No doubt आपको गौरव क्यों पसंद है? Exactly him. I sent this emoji a lot. Now I'm doing it in real life. That's not good. He said that दूसरा लड़का पीछे हो गया. क्या मतलब? अच्छा. और फैंटेसियों के ऊपर बना. तो आप यहाँ पे जितनी भी अपनी फैंटेसी पूरी कर सकते हो. राउंड बेड है. He's nervous, yes. मिरर है. ये बेड के ऊपर ही पोजेस बने हुए हैं ताकि बंदा पोजेस देखता जाए और ट्राई करता जाए. ये देखो भाई. If you don't know what to do, you gotta look at the bed. If you don't know what to do, you wait at interior. अच्छा. I knew it. मैंने ट्राई कर लिया. I knew it. ये क्या है? खैर इसमें गौरव की गलती थोड़ी है. वो तो होटल वाले लोग हैं. How dare you guys blame Gaurav for that? Oh my God, what is she doing there? All right, you know what? इसमें आपको मिल जाएगा इन्फिनिटी पूल. और ये देखो जो लोकेशन है भाई जिम कॉर्बेट से हल्का सा ऊपर है. इनका वॉशरूम बहुत स्पेशियस है भाई. और इसमें ना जकूजी मिलता है ताकि आप गर्म पानी में भी एंजॉय कर सकते हो. फैंटेसी पूरी कर सकते हो, है ना. सो यो मेरे जिगर के छल्लो कैसे आप सब. और आप देख रहे हो अपना बूम गौरव. ऐसे लिखने बोला था. ये कैसे आ गया? बट देखते हुए डिलीट किया उन्हें. यप भाई तुम्हारा भाई कुछ ऐसी लोकेशन पे रखा भाई. अल्टीमेटली देख रहे हो भाई आज आपको दूंगा एक ऐसे होटल. गौरव काश में होता है यार यहाँ तेरे साथ. जो I mean तेरे जगह पूरे इंडिया में नहीं है. पहली बार खुला है. 4 साल हो गए हैं इसको. तो ऐसा होटल आपने थाईलैंड जापान में देखा होगा जहाँ पे ये प्रॉपर ना मैंने नहीं देखा. हुआ है. जैसे आप सभी को पता है कि भाई आप खजुराहो गए हो कैसे कामसूत्र की थीम होती है. ये तो उस थीम पे ये बना है प्रॉपर रिजॉर्ट. और उसके रूम्स भी ऐसे हैं इसमें. I love how Gaurav is trying to be very careful navigating this topic. I love it.
Spoke too soon. बंगाल में तो छापा पड़ रहा है, भयंकर आर्म्ड पुलिस फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया है और साथ में बॉम्ब स्क्वाड्स को मोबिलाइज किया गया है. ऑरेंज पुलिस बसेस यू मीन बहुत आ रही हैं. दैट्स गुड. वी नीड टू डू अ लॉट ऑफ चेक्स लाइक दिस. या स्पॉन्सर किया होगा इसलिए शायद. स्पॉन्सर किया होगा मतलब उसको कोई कूल जगह दिखी होगी, उसने मैसेज कर दिया होगा डीएम कि भाई मैं आ रहा हूँ, यहाँ मेरा स्टे वगैरह करा दो. आई गेस बिकॉज ही इज नॉट गेटिंग दैट मेनी व्यूज, तो मे बी ही इज जस्ट डूइंग द बार्टर थिंग. पोल्स हैं, रूम्स हैं, जिसमें और अलग अलग आप चित्र देख सकते हो. बहुत सारी चीजें मैं खुल के बोलूंगा. उस होटल का टूर देंगे. तो ये देखो भाई, इसमें आपको मिल जाएगा इन्फिनिटी पूल, और ये देखो जो लोकेशन है भाई जिम कॉर्बेट से हल्का सा ऊपर है. पूरी आइसोलेटेड एरिया है और यहाँ के आसपास लगता है गढ़वाल जंगल, ठीक है. और जिम कॉर्बेट तो जिससे पूरा हैबिटेशन यही है. दिखाते हैं कि यहाँ क्या क्या मिल जाता है. निशा जी खाना लगा रही है. क्या क्या है भाई? ये पूरा लंच है, तो बफे लगा हुआ है पूरा आज है. अच्छा ये देखो नूडल्स खाना लगा रही है. आई थॉट ओके हैं, असॉर्टेड ब्रेड्स हैं और थाई कड़ी है, स्टिकी कुरकुरे, भिंडी, मिक्स वेज. ये देखो भाई. सॉरी लेकिन इसमें एसटीडी के चांसेस नहीं होते होंगे. कैसे पता है इस पे अच्छे से सफाई होता होगा. ह्यूम इट्स जस्ट लाइक एनीथिंग एल्स. मतलब खैर पहली बात तो आई एम आल्सो little extra worried about STDs. But the good thing is I'm asexual, so it doesn't matter. लेकिन you have to operate with some level of faith in everything, in all the institutions. तुम कहीं पर भी जा रहे हो तो you have to like ये खाने में how do you know ये खाने में कुछ ऐसा नहीं है जो तुमको बहुत ज़्यादा बीमार कर देगा, राइट? और हम कितनी जगहों पे बाहर जाते हैं, हम शादियों पे जाते हैं, हम कहीं बाहर घूमने जाते हैं, वहाँ कुछ खाते हैं. So we are always working on certain level of faith in different institutions. So yeah. इट्स बेसिकली जस्ट दैट. अरे नहीं गौरव काम करने जाता है, कांड हो जाता है, इसलिए केयरफुल बात कर रहा है. शायद जेल में खाना अच्छा नहीं बन रहा. सब मिल जाएगा आपको. ये देख सकते हो वत्सन आएगा, पूरा खाना एक नंबर है भाई. तो वेज नॉन वेज सब मिल जाएगा. क्या बात है. तुम्हें कैसा लगा खाना? नाउ इट फील्स लाइक इट्स मच मोर देन अ बार्टर एक्चुअली, बट इट कुड जस्ट बी अ बार्टर टू बी ऑनेस्ट. हर जगह थोड़ी खाना खाते हैं, बहुत जगहों पे खाते हैं ना हम जब तब भी. और खाना खाना एक एग्जांपल हो गया. ऐसे हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं. हम अगर मैं टैक्सी में किसी के पीछे बैठ रहा हूँ तो हाउ डू आई नो द गाय इज नॉट ड्रंक, यू नो. एंड आई कैन से दैट बिकॉज आई हैव बिन इन 2 Ubers जहाँ पर आई वाज हाईली सस्पेक्टिंग के बंदे ने पी रखी है रात को 2-3 बजे. सो नीलेश यूजिंग सिंगल बेल्ट ऑन मल्टीपल पीपल, उसमें भी एसटीडी का. हम 2 दिन से यहीं पे बैठे हैं. फक ऑफ. व्हाई वुड यू यूज अ बेल्ट ऑन पीपल डूड? चिल कर रहे हैं. तो मैंने एक होटल टूर दे ही देते हैं आपको. कितना बढ़िया है ये. तो भाई अभी अपन ने खाना खा लिया. तो भाई वैरायटी देखो भाई खाने की. ये सारा I love how she corrected him. Oh, that's cute. That's cute. They're nice together, right? There you go. That's cute. मनीषा भी पूछना भर के लिए तुम. नहीं हम दोनों का लेंगे. अच्छा तो हम दोनों ही खाने वाले हैं. Well, okay. लैपटॉप ने अपन ने काम कर लिया फिर खा के. एक्चुअली आपने कल वाले ब्लॉग में देखा वो मेरी गाड़ी फंस गई थी. तो मेरी गाड़ी भी नीचे खड़ी है 2 घंटे नीचे जिम कॉर्बेट के भरे जंगलों में. तो लेपर्ड का बच्चा देखा था. तो कल वाला ब्लॉग नहीं देखा तो लेपर्ड का बच्चा देखते क्या हुआ. लाइट बैटरी डाउन हो गई क्योंकि लाइट ऑन करके हमें लगा वो लेपर्ड भी आएंगे. तो हाँ तो लाइट ऑफ हुई जैसी और मेरी गाड़ी की बैटरी डाउन हो गई. फिर हमने ट्राई करी जंप स्टार्ट करनी बट जंप स्टार्ट हुई नहीं. तो फिर हाँ देख लेना फिर क्या हुआ और फिर आज का दिन कैसे. तो गाड़ी भी लेना. Actually cute, me man. Actually, it was not cute, Malika. It was actually not cute. I was fucking around. It was not cute. I only said it because I thought that's what you're supposed to say, you know. Me man, probably never. That's mean. I'm sorry, I don't mean that. MacBook पे JBL का स्टिकर. Yes, मैंने भी देखा. मानव क्या हालत है? Thanks for joining stream, buddy. खाने से बीमारी. माँ कसम नीलेश तुम्हारे मेस की कुक वाली आंटी .710 को आती है और 752 के को घर चली जाती है. वो खाना खा के हम 20 लौंडे सालों साल जिंदा हैं. हम पे तो हेवन है ये. ऑलराइट, देयर यू गो. बट दैट्स माय पॉइंट कि जहाँ पर तुम ओवरऑल यू लिव इन द वर्ल्ड हैविंग फेथ इन अ लॉट ऑफ डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस एंड अ लॉट ऑफ डिफरेंट पीपल. दैट्स हाउ वी लिव, दैट्स हाउ वी सर्वाइव, दैट्स हाउ वी ऑपरेट. सो इट्स जस्ट द सेम इफेक्ट देयर. लेने जाना है फिर दिल्ली भी जाना है. मैं हेवन हूँ. अच्छा शिट, सॉरी. हेवन लिखा उसने. अच्छा ओके, यू आर टेलिंग इट टू हिम. But this looks like a cool place, right? Was intro the best part? Most likely. Oh भाई साहब, गौरव जोन ऐसे इसने बीच में कॉपीराइट करके लिखा है. गौरव जोन, like people are stealing his videos. Good night all. Do my best to join the watch party on time. Yes Shahitesh, thank you dude. Good night. Thanks for joining stream buddy. Take care. इसी फिलोसफी के साथ नीलेश इतने सालों से फरीदाबाद में रह पा रहा है.
यस, आई थिंक आज ही मैं न्यूज़ देख रहा था फरीदाबाद में चाइल्ड 15 साल का बच्चा गॉट स्टैब्ड बाय कपल ऑफ 15 साल के बच्चे एंड आई हैवंट सीन अपने सामने बट मेरे आसपास के लाइक आई एम नॉट किडिंग अबाउट दिस ओके मेरे आसपास पीपल हैव बिन स्टैब्ड people have been shot and killed like people I know right have been stabbed and killed shot and killed and there have been others as well खाना और एसटीडी दो अलग चीज़ें हैं लेकिन आपको चलता है तो कोई बात नहीं हम लोग फ्रेंड को जज नहीं करेंगे ह्यूम yes I cannot help it I guess I'll try to adopt the same philosophy of not judging you but yeah I've seen and yeah तभी तेरे को पार्क हो रहा था एग्जैक्टली सी फरीदाबाद में आज हाई अलर्ट है ना नीलेश यार पता नहीं मैं घर से बाहर निकल सका हूँ वहाँ तो शाम से पूरा एरिया एनआईए के अंडर ले लिया है शायद बॉम्ब ढूंढ रहे हैं यार आई थिंक वो मेरे आसपास के एरियाज़ में नहीं है वो हो रहा वो सीन आई डोंट थिंक दिस इज़ द एरिया जो कि ज़्यादा वो है मुझे कहाँ रहता मैं फरीदाबाद में रहता हूँ I don't know. I don't want to make this too dark. Okay, there was this guy. Okay, I don't know. Should I? तुम्हारा मूड बेफालतू में खराब होगा. I guess. Okay, whatever. आपको बहुत सारी ऋषि जी की बहुत बड़ी मूर्ति मिलती है जिन्होंने कामसूत्र लिखी थी और उसी बेसिस पे उसी थीम पे पूरा रिजॉर्ट बनाया वो देते हैं Wait, did one guy write the entire Kama Sutra? मुझे लगा it would also be a collective work. बताओ देखो कितनी देखो hashtag dank आ गई जानने यूनिवर्सिटी का एरिया है मेनली अच्छा फरीदाबाद में यू मीन जो हाई अलर्ट पे मैं तो कोरोना का वीडियो देख रहा है स्ट्रीम ऑलरेडी डार्क हो गई है तो मेरे घर मेरा लाइक आई हैव अ रियली गुड फ्रेंड लाइक वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स इन द वर्ल्ड राइट उसके घर के बहुत ही पास उसके घर के बहुत ही ज़्यादा पास देयर वाज दिस गाय जिस को हम जानते थे कि जैसे होता है ना कि यू नो दिस गाय कि हाँ ये बंदा है इसका ये नाम है यहाँ रहता है यहाँ पढ़ता है उतना तुम जानते हो उसको तो about I guess a decade ago that guy murdered his mother they say मतलब काफ़ी ज़्यादा you don't care about the reasoning and उसके बाद he went to prison for like 6 months 7 months his dad got him out afterwards and then उसके थोड़े टाइम बाद he committed suicide so yeah weird shit has been happening here a lot like I know a few stories like these so oh yeah all right and fuck you Parth fuck you Parth ये शायद पहले भी बताइए मैंने I don't think so generally I don't go around highlighting these things one of my classmates also committed suicide आपको टूर तो देखते हैं यहाँ पे आपको रूम क्या इनफैक्ट मेरे दोस्त की जो शादी थी ना उसमें मैं एक पुराने दोस्त से मिला था और हम यही बात कर रहे थे भाई जो एक सर्टेन छोटा सा ब्लॉक है यहाँ पर कितने ऐसे कांड हुए हैं जिसका मैं बता रहा था द गाय हु गॉट शॉट एंड किल्ड वो भी उसी एरिया से था द गाय हु ऑफ्ड हिमसेल्फ वो भी उसी जगह से था द गाय हु ऑफ्ड हिज मदर एंड देन हिमसेल्फ वो भी उसी जगह से था लाइक देयर इज दिस छोटा सा एरिया एंड दैट इज लाइक 3 out of I guess 6 or 7 fuck off मेरे शायद उसका पता होगा जो मेरा क्लासमेट था मैं क्या बताऊँ मेरे इधर तो घर में बॉम्ब मिलता है ऑलराइट हाँ स्कूल में मेरी फ्रेंड से साइड अटेम्प्ट किया था लेकिन बच गई फिर उसके पापा ने किया वो अब नहीं है डेविल मेड मी डू इट वाला सीन होगा नहीं the guy who offed his mother he was too much apparently that's the story he was too much into drugs और मतलब there has to be something really horrible going on in your mind for you to do something like that लेकिन the story was कि he did it for 50 rupees that was the story
I don't know how true that was. In fact, तो हम लोगों को ये ऐसा कुछ हुआ है, ये पता लगा था about 24 hours after the thing that actually happened. And मैं मेरे 2-3 दोस्त, we are quite positive कि जब वो ये काम करके निकल रहा था, अपने घर से जा रहा था, we saw the guy going off. But yeah, of course we didn't know. क्या मिलने वाले और क्या क्या एक्टिविटी मिलने वाली है, आ जाओ चलते हैं, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। तो भाई ये कौन कौन से रूम है ये बताओ। अच्छा 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 अच्छा। उसकी आवाज ही नहीं आ रही है भाई। वो कामा सूत्र समझ आया खाली। भाई बेसिकली आप जैसे सभी को बताइए कामा सूत्र के ऊपर ये पूरा रिजॉर्ट बना, तो यहाँ की थीम भी वैसे और यहाँ के रूम्स जितने हैं ना सब अलग अलग है और हर एक की अलग थीम है। किसी में पोल डांस है और हर एक रूम में चित्र मिलेंगी। तो आ जाओ देखते हैं। तो ये पहले तो हर रूम के बाद कोटेशन मिलेगी कामा सूत्र की। आ जाओ, सारी लग्जरी प्रॉपर्टी है गाइस। तो इसमें और भी प्रीमियम रूम्स है वो आपको दिखाएंगे। वाओ भाई क्या अमेजिंग रूम है। तो भाई ये देखो कितने बढ़िया रूम्स है भाई, ये बेड कितना बढ़िया और यहाँ पे आप देख सकते हो चारों तरफ पर्दे हैं और ऊपर इट्स ओके वुडन है। तो इस रूम के बारे में बताओ कौन सा रूम है। हमारा इलाका पॉपी कल्टीवेशन की वजह से बदनाम है। व्हाट डज दैट मीन? आई डोंट नो। यहाँ जब झमेला होता है, ट्रक में लाश आती है पुलिस स्टेशन, और यहाँ 60-70 किलोमीटर इलाके के लिए एक स्टेशन है बस। ओह ओके। सीलिंग काफी अच्छी व्हाट द ओह और यहाँ भी आपको जैसे आप सभी को पता है True. कामा सूत्र की थीम पे बना, तो यहाँ भी आपको पोल मिलेंगे और हर जगह आपको ऐसी एक्साइट करने वाली चीजें मिलेंगी। एक नंबर। आ जाओ, यहाँ भी पेंटिंग्स भी आपको वैसी I'm not very excited right now. मिलने वाली है। आ जाओ, यहाँ का बालकनी व्यू दिखाऊं आपको। 360 व्यू है। हर रूम से हमारे 22 पिक्स दिखती हैं। अच्छा अच्छा। इंडिया की जो सेकंड लार्जेस्ट पीक है नंदा देवी ईस्ट, वो यहीं से दिखती है। अच्छा, तो भाई बहुत बड़ा व्यू है। तो भाई सारी पहाड़ियां दिखेंगी और यहाँ ना भाई लेपर्ड, टाइगर, हर चीज है। तो मतलब पूरा वाइल्ड लाइफ वाला एरिया है। मजा आएगा। चलो और रूम देखते हैं। तो भाई आप वॉशरूम से भी आप नहाते नहाते हिमालय का मजा ले सकते हो। भाई ऐसी प्रॉपर्टी मैंने नहीं देखी जिससे सामने का व्यू दिखा हो भाई। This is just an ad. This whole video is just an ad. What is Shut up, dude? Dude, this is sad, Gaurav. I'm sorry, dude. How can you make Kama Sutra boring, my guy? Smelly. Do Indians really smell very bad? What is wrong with Shatab either? As well, I mean. अशोदी मेरे पे भी है एक बेरेटा, और पुरानी एक रिवॉल्वर भी है, लंबी नली वाली। दिस गिव्स वो पहले होममेड व्लॉग्स होते थे 17-18 के आसपास, विदाउट मच एडिटिंग, और बस एक रैंडम सा म्यूजिक प्लेइंग। यू मीन वाइब्स? मैंने कहा यू मीन वाइब्स? That was just sad. The fuck? I didn't write it. Okay, ह्यूम वाली वीडियो देखते हैं। Fucking dick. तुम देखो, इसलिए पॉडकास्टर चूतिया है, इसलिए पॉडकास्टर चूतिया सारे। ये हर्ष गुजराल को बुला रहा है एंड डिस्कसिंग व्हाट रिलेशनशिप्स, फैमिली, मैरिज। दिस इज द फर्स्ट 3 things. Look at this. Do you understand your And this better not be a fucking comedy intro. father? Do you think कि आप उनको समझते हो? समझता हूँ, बट मान लो शादी क्यों नहीं कर रहे तुम, तो उनको बताते हैं कि पापा अभी लाइफ अलाउ ही नहीं कर रही है वो फेज आने में। अभी अगर भाग के हमने तुरंत शादी करी, सडनली फैमिली का डबल, तो आपको टाइम डबल करना पड़ेगा ना, आप करोगे। See clip. अब मैंने क्या बोल दिया? What? Hume has never asked for a clip? No, she has. सुमन, हमारे यहाँ कोई ऐसे ब्रैक करते हैं अपने आम को, कोई तो उसको बोलते हैं उसकी लंबी नली को। ऑलराइट। यार fucking जब है। वैसे मेरी पता नहीं, मैं जैसी बन गई है कि काफी सीरियस चल रहा है ना, अच्छा देख के लगता है कि अभी आप स्कूल जाते हो। Look at Raj. Oh my god. Oh my god. अच्छा, मैं कुछ कहने वाला था। अरे तूने सीरियसली साले भेजी है तूने? इट्स एक्चुअली फनी क्योंकि मैं लास्ट मंथ मतलब मैं देख रहा था नए स्कूल में एनरोल करने का। मुझे बुरा लगा कि आपको देख के लगता है कि हाँ मतलब कुछ शरीफ बच्चे होते हैं जो मैंने शक्ल ऐसी, जिनके बैग से लंच बॉक्स निकल आता है, एक्चुअली मैंने दिया होता है। शरीफ तो कहीं से शक्ल नहीं है इसकी, कतई हरामी वाली शक्ल है इसकी।
इसकी कतई हरामी वाली शक्ल है भाई। शरीफ तो कहीं से शक्ल नहीं है राज शमानी की। लाइक मैंने कभी भी किसी भी शरीफ इंसान के ऐसे दांत ऐसी आंखें का कॉम्बिनेशन नहीं देखा लाइफ में। सॉरी डूड, इसकी शक्ल बहुत कनिंग है। ये बात मैं आज से नहीं शुरू से कहता रहा हूँ, बहुत कनिंग शक्ल है इसकी। ये 2.5 की मूवी आपने सेंड किया है हैं? अरे नहीं देख रहा मैं पूरा, डोंट वरी हूँ। ब्रैग नहीं भाई, यहाँ आपके खुद के सिक्योरिटी के लिए रखना पड़ता है। अच्छा ये टॉकिंग शुड बी ओके। हाँ अच्छा, बाय द वे वन ऑफ द थिंग्स, मैंने एक प्रखर का वो देखा यार अभी। प्रखर मेड सॉर्ट ऑफ अ ट्रेलर कि ओ अब मैं पॉडकास्ट अच्छे करने वाला हूँ अंग्रेजों के साथ, तो वो अच्छे होंगे। आई डोंट I don't want to be a dick to Prakhar. I like him, like I said before. I mean, I don't like him, but I don't want to be a dick to him. I don't think. I think Prakhar can be a much better content creator than he can be a podcaster or an interviewer. I don't think Prakhar can be a very good interviewer. क्योंकि this whole PR move right now जो चल रहा है ना अभी के अब बढ़िया बढ़िया पॉडकास्ट होंगे, लाइक उसके बाद जो ट्रेलर मैंने देखा है, द होल ट्रेलर इज दिस के प्रखर कोई सवाल पूछता है, फिर गेस्ट कहता है ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये तो बहुत स्मार्ट क्वेश्चन है, ये तो बहुत ही दिमागदार क्वेश्चन है, तो मुझे सोचने पे मजबूर कर रहा है। An interviewer is not sorry, an interview is not about the interviewer, it's about the interviewee. It's not about how smart of a question can I ask. That's the whole selling point now. हाँ तो पॉडकास्ट में इतना मेहनत नहीं लगता। वट क्या बात हुई, मैं ध्यान नहीं दिया कुछ। कुछ मैंने मिस करा ना। हाँ तो पॉडकास्ट में इतना मेहनत नहीं लगता। आई डोंट नो पॉडकास्टर्स को ये क्यों लगने लगता है कि दे आर रिस्पॉन्सिबल समाज को आगे बढ़ाने के लिए, चुपचाप बात कर पैसे छाप। आई थिंक हर कंटेंट क्रिएटर में जो भी थोड़ा सक्सेसफुल होता है और जो भी बकचोदी ज़्यादा करता है उसमें नार्सिसिज्म होता है, और शायद होना ज़रूरी भी है, यू नो, टू रियली get to that level maybe. I don't know. I mean, you fucking dickheads. Hold on. क्या हाल है जानम? Thanks for joining stream buddy. बस UPI करो फिर बात खत्म है। What the? Actually, I don't know how, okay, you know what, fuck it. I don't know how much of this you realize, how much of this I have to spell out, or how much should I even say. Like, I make an effort to be the butt of the joke on the stream, or like over half of the times. As okay, hold on, how to explain this? Shweta should consider starting a podcast. I don't know if he'll be good at it or not. I have no idea. किस पॉडकास्टर को लगता है रिस्पॉन्सिबिलिटी समाज को आगे बढ़ाने की? रणवीर अल्लाह वेदी। अरे 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 भाई क्या हो गया सुमन भाई? राज अरे अरे कुछ भी। See, that's what I meant when I said you won't get it. डॉट देखा सामने वाले को पॉडकास्ट है, ये पॉडकास्ट वाली बीमारी बहुत बढ़ गई है। That's mean. I think content creators as a whole, not just podcasters. Same goes for bloggers as well. There's only one podcast. NKP. NPR कह रहा था मैं। NPR क्या है? I have no idea what NPR is. शुद्धि का क्या मिस करा? यो जन्म क्या हाल चाल? प्रखर को कमबैक के लिए डॉक्टर को बुलाना चाहिए, वो वाले। कौन से डॉक्टर? कौन से वाले डॉक्टर को? आपको डिस्कॉर्ड पे यूट्यूब पर भेजा रिसेंट केस का, ललन टॉप चोर का इंटरव्यू। ये कह रहा है क्या भाई? आई थिंक टू बी पॉडकास्टर यू नीड टू बी अ लिटिल बिट of a people pleaser. Shwetab loves presenting that he is not one. So no. Shwetab is definitely a people pleaser when he's talking to people. Have you not seen him?
जो वन ऑफ दोज वायरल मोमेंट्स जो शताब की थी पहले विद द पापा सीजे थिंग, लाइक ही एब्सोल्युटली हेटेड पापा सीजे के सारे टॉकिंग पॉइंट्स, बट ही वाज बीइंग वेरी नाइस देयर. मेरा बेटा कैसा है नीलेश बेटे? नमस्कारम आंटी जी. शताब विजिबली अनकंफर्टेबल लगता है जब कॉन्वर्सेशन में उस पे स्पॉटलाइट नहीं होती. ही हैड डन पॉडकास्ट इन द पास्ट, उसमें ही यूज्ड टू शेयर हिज ओन स्टोरीज. ओके, दैट वाज जिसका हमने पॉडकास्ट देखा था, द डॉक्टर. ओह या द मिसोजिनिस्ट डॉक्टर. Yeah, but that's the thing. Like जो मैं बता जो वाली बात करूँ, there's no point even getting it. You're not gonna get it. When I was young, ये तूने 41 मिनट की वीडियो भेजी, ब्रेन सागा तो है ही नहीं यहाँ पर. मैं 41 मिनट की वीडियो नहीं देख रहा. Especially about card tricks. Who gives a fuck about card tricks for 41 minutes? What the fuck, dude? Oh my god. Fucking card tricks. Oh my god. Awkward का podcast best. Oh my god. आपको डिस्कॉर्ड पे भेजिए एक लर्नर टॉप वाली, यू मीन? ये कौन है इतने सिल्की हेयर्स? ही इज अ यूट्यूबर. ये बताओ नजर कल हमारी नजर के सामने से कौन मार ले गया था हमारा लैपटॉप? दो दोस्त था मेरा. यहाँ से कितना दूर ले गए थे लैपटॉप हमारा? अरे वो सामने पेड़ दिख रहा है. हाँ. वो लास्ट वाला पेड़ वहीं पे था. कहाँ थे वो? पेड़ के ऊपर. तो पेड़ के ऊपर कैसे लेके गए? चढ़ जाते बोले. 20-22 लोग घायल थे. इतनी बड़ी दुर्घटना के बीच में वो लोग ले गया. बात सही, तुम्हारा गलती थोड़ी ना. चोर तो चोरी करेगा ही. हाँ तो अगर हम लोग थे जो बता दिए, अब बड़े लोग होते तो तुम्हारा लैपटॉप लेके गायब. मैंने बोला चल मुझे बता दे, फिर मैं चढ़ के उतार दूंगा. तो उसने बताया, फिर नींद में था वो. मैं ऊपर चढ़ा, उतार के लिए. क्या कहें तुमको बताओ? क्या कहोगे? थैंक यू बोले. थैंक यू बोलो, पैसा दो. आज हम आपको मिलवाने वाले चोर से. ये दिल्ली है मेरी जान. वेलकम टू दिल्ली एनसीआर. एक चोर जो नाबालिग है, एक चोर जिसने बड़ी होशियारी से हमारे लैपटॉप को चुराया और फिर दानवीर बनकर हमारे. Good night, Hume. Thanks for joining the stream. I hope to see you soon. Take care. Hume साहिबा, सब छोड़ो, लोगों को भगाओ, डिस्कॉर्ड लगाओ. हैं? क्या? Fuck off. बंगाल यूट्यूब में भी कुछ दिन ये तांत्रिक भूत चल रहा था. पुलिस ने पॉडकास्टर को भी पकड़ लिया और गेस्ट को भी. 2 महीने से मोस्ट पॉडकास्टर्स ने ये सब बंद कर दिया है. एब्सोल्युटली फकिंग रिटार्डेड. हमारे सामने अपनी ही चोरी की कहानी हमें किसी और के नाम से खूबसूरती से बेची. लेकिन उस चोर को पता नहीं था कि जब वो चोरी कर रहा था तो कुछ और कैमरे थे जो रिकॉर्ड कर रहे थे और उन कैमरों में उसकी चोरी की साजिश पकड़ी गई. I have a horror short film. We can watch it. We can watch it. We can watch short films as well, वैसे generally. उसमें जो इस चोर का वर्जन है, ये वो वर्जन है. तुमने मुझे बताया नहीं भाई. I want to make a video, like, but I don't know. Would it be weird for me to make a video on this channel? Just me sitting around and talking, like that guy, जो silky bar वाला. What's his name? I cannot remember right now. I want to make fucking a couple of videos where I don't have to put a lot of effort in making the video, rather in writing them. I want to make a Gaurav Zone video. I want to make a podcast video. मतलब video about podcasts. तो वो अपने दोस्तों के नाम पर सुना रहा है. लेकिन जहां जहां इसमें दोस्तों की कहानी सुना रहा है, वहां पर 2 दोस्तों में एक दोस्त वो खुद है. ये वीडियो देखिए आप. भेजी मैंने. Oh, okay. अभी देखो. I hate horror films. भाई मेन मोमेंट तो कैप्चर करा ही नहीं जो लैपटॉप उसने निकाला है. पूरे देश में एक से अच्छा इन्होंने रखा हुआ था लैपटॉप. व्हाट भाई, फिर तो यू गाइस वर आस्किंग फॉर इट. तुम पागल हो क्या? वो लोग ले गया. बात सही, तुम्हारा गलती. फिर मैं चढ़ के उतार. थैंक यू बोलो. वेलकम टू दिल्ली एनसीआर. एक चोर जो अपनी ही चोरी की कहानी हमें जो रिकॉर्ड, जो इस चोर का वर्जन है, ये वो वर्जन है जो वो अपने दोस्तों के नाम पर सुना रहा है. लेकिन जहां जहां इसमें दोस्तों की कहानी सुना रहा है. अरे डाउनलोडेड हॉगवर्ट्स लेगेसी. एनीवन वांट टू प्ले द गेम? दिस हॉगवर्ट्स लेगेसी गेम. I just downloaded it. अब ये क्या कंटेंट है?
अच्छा कोई और आप भेजे और तो ये क्या कंटेंट है? तू भेजे तो बढ़िया है। तुम एक दोस्त वो खुद है। ये वीडियो देखा? Oh, you fucking idiots. Oh my god, you guys are idiots. You guys are absolute idiots. Oh, बढ़िया गेम है, बढ़िया गेम है. We can play it if you guys want. You guys are absolute idiots. तुमने ऐसे लैपटॉप रखा हुआ है भाई. चोर तो क्या मैं ले जाता? I mean, नहीं शुभंकर को बोल रहा. अच्छा. Sorry. You guys have to be idiots. It's very easy to steal. भाई इसके हाथ में कंबल भी है. इसके साथ में दोस्त है. He just needs. Oh my god. See, कंबल में ही लपेट रखा उसने. पूरे देश में इस बात की कल चर्चा थी कि एनआईए, एनएसजी, यूपी एटीएस, हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस के रहते लैपटॉप कैसे गायब हुआ था। लेकिन आज हमको लैपटॉप मिल गया है। वो मैकबुक जिसको लेके कल से लाखों लोग हमको मैसेज भेज रहे थे कि सर मिला कि नहीं मिला, जिसको लेकर लोग मीम बना रहे तो मिला है, लेकिन लैपटॉप मिला है ये इंटरेस्टिंग नहीं है, ये साधारण सी घटना है। असली घटना जो है उसके पीछे कहानी में है। पहले तो थैंक यू सर आप लोग को। सर ये आपको देखने के सौभाग्य से ये चीज़ हमको प्राप्त हो गई। हम आपको देखने आए थे, पता चला कि यहाँ लैपटॉप की बार्गेनिंग हो रही है। मैं कहा भाई कहाँ लैपटॉप मिल रहा है, तो उन्होंने मीडिया वाले आपके साथ ही ले रहे थे, तो हमको पता चला ये बच्चा बेच रहा है। फिर हमने कहा भाई हम खरीदने जो पैसे होगा हम देंगे, हमको नहीं उस चीज़ की। तो बार्गेनिंग करते करते इनके साथियों तक हम पहुंचे, तो वहाँ पता चला इनके इतने छोटे छोटे से साथी हैं। और Because Shubdeep has been stalking you for like an year, Malika Hind. इन्होंने लैपटॉप को सर वो पेड़ है। And why the fuck were you playing for so long? नीलेश हमको पता है भाई शाम 7 से 9 बजे उठाने का काम है, पर स्ट्रीम पे खुद को एक्सपोज मत करो. फिर स्ट्रीम पे खुद को एक्सपोज मैथ करो. उसकी गाली पे इन्होंने कपड़े में लपेट के रखा था। जैसे हमने उसका वो खोला सर आपकी फोटो में दिख गई। बेचल भाई तुमको कुछ इनाम दिलाते हैं। अभी आपको सबसे पहले तो वो लोग जो Hey, why the fuck would you not reset the laptop? कहते हैं कि भैया दिल्ली पुलिस जो है वो लैपटॉप नहीं खोज पाएगी। 2 मिनट का मौन आपके लिए, क्योंकि हमारे भाइयों ने लैपटॉप खोज के दिया। आशीष पांडे जी और आदित्य पांडे जी जो है वो यहाँ पर है, और इन्होंने लाकर हमको खोज कर दिया जब यहाँ पर हमारे टीवी पर अपना रात 10 बजे का शो तैयारी कर रहे थे। लेकिन असली कहानी जो है वो लड़के की इधर ये थोड़ा सा घबराया हुआ है, इसको लगा इसको डांटेंगे नहीं। नाम क्या है तुम्हारा? नजर। नजर। ये बताओ नजर, कल हमारी नजर के सामने से कौन मार ले गया था हमारा लैपटॉप? दो दोस्त था मेरा, दो दोस्त था मेरा। भाई Malika Hind, 9 hours really? Hold on. Did he say 9 hours? 9 hours? How many hours? हाँ 9 hours. Oh my god, Malika Hind, you are a student. नाम है और नूर नबी नाम है का। हां तो अनस और नूर नबी ये रात को कैसे लैपटॉप हमारा मार ले गए? लड़ाई हो रहा था बंदों में, दो बंदों में। वो जो कुत्ता वाला डिबेट चला था। हां वो दोनों में लड़ाई हो रहा था। हम दो अंकल से पूछे लैपटॉप किसका है, वो बता रहे नहीं मुझे नहीं पता, मीडिया वाले थे। उन्होंने बोला मुझे नहीं पता। मैं उसने फिर कपड़ा रखा उसने। पहले कपड़ा दिया उसके ऊपर ताकि नजर थोड़ा सा Okay, ठीक है, fuck it. Boring. Let's just watch the short film. 9 hours 20. Oh my god. Oh my god, Malika Hind. Listen. Discord spies on you, Malika Hind. Basically, you have to tell Discord not to tell people. कुत्तों वाला डिबेट क्यों हो रहा था? Okay, let's watch this. Fucking I hate horror, dude. Why the fuck would you send me horror? अबे अकाउंट डिलीट मत करी Malika Hind. शिवदीप बता दे उसको. बेचारी का तू डिलीट करवाएगा अकाउंट. You still working? Check this out. Jesus
Cody. But the rumor online is that this woman, Mora, सॉरी बट ऐसे ही दीपक कहता है कि मुझे GTA 5 का प्रोलॉग मिशन करने में 6 घंटे नहीं लगे थे, मैं छोड़ चुका था। नहीं, उसको 6 घंटे लगे थे। show up in AI images if you use the right prompts, but it's only with pictures of death and gore. Like she's drawn to it. Here. People have found these pictures from AI creators on Twitter and Reddit. She shows up visually consistent in all of them. Same scars, same elongated arm. Totally unprompted. It's basically impossible for an AI to do. If I can just reverse engineer these sightings, find the right prompt, I know I can find her. Why would you want to find her? Oh, actually, she's an anomaly. If I can reliably catch the first ghost in the machine, I could really make a name for myself, like, for us in this space. Jesus. Is that really what you want to be known for? Yeah, I had 3 clients last week. Told me they no longer needed my help. Like, they didn't say it, but it's the same story I've heard everywhere. Why pay an artist when you can have the AI do it for free? Your work has personality. An AI can't do that. Okay. I am sorry. Personality doesn't keep the lights on. Need something more shocking to even be seen above the noise now. You know, your ghost doesn't look like she wants to be caught. What? She just looks so sad and alone. I'd be too if I was trapped in pictures like that. I'm going to sleep. Show your new muse, Cody. क्या बोल के गई मुझे समझ नहीं आया, बट आई डोंट नो। Uh-oh. TS is so funny. What do you mean TS? Oh, the shit? Oh, that's why Malika never turns off her computer, because it turns back on again. Oh fuck, I missed it. Okay. Holy shit. Dude, I hate horror so much. You fucking pieces of shit. She has the same finger? I found you.
Uh-oh. Just don't make anything too loud. Hannah?
Dude, that's so fucking cool. Written, directed, edited, and VFX by the same guy. Oh my god. Amazing. Amazing work done by Sam Evanson. इसके लिए लगी क्या? Yes, मेरी तो खैर फटती हर चीज़ से. Why did Malika Hind find it funny? Because is that your coping mechanism? I didn't love it from the writing perspective. लेकिन एक चीज़ मैंने मिस भी करती. I didn't want to pause it or go back, not to ruin your experience. What was his process? How is he trying to find her? You know, your ghost doesn't look like she wants to be caught. What? Your work has personality. An AI can't do that. No, personality doesn't keep the lights on. Why would you want to find her? Working? It's death and gore. Like she's drawn to it. Here. People found these pictures from AI creators on Twitter and Reddit. This is also a cool little touch. Drawn to it. Here. Her fingers were normal back then. People found these pictures from AI creators on Twitter and Reddit. She shows up visually consistent in all of them. Same scars, same elongated arm, totally unprompted. It's basically impossible for an AI to do. If I can just reverse engineer these sightings, find the right prompt, I know I can find her. Okay. Why would you want to find her? Yeah, that I did not understand. Like, how does that work? He kept trying to make it more realistic, and the generations more realistic, and Bare Bones, like narrowing it down exactly to what makes her her, getting her gestalt. Is that what he was trying to do? What the hell? No. Here's what he's doing. This is what I think he's doing. So ये image generation tool में काम कर रहे हैं ना. So what he is doing, so you see ऐसी बहुत सारी different photos, paintings, right? This is what is happening. Everyone is generating and they're getting results like these, right? That's what they're getting. So जैसे this is a sea of generations अलग-अलग. So he's just eliminating all of those things and just trying to narrow it down further and further to get to the starting point. I think that's what he's trying to do. Does that make sense to you? In the film. But no, very मैं क्या बोलने वाला था पहले कि this is shot, edited, sound, everything is super professional, right? उसके बाद I didn't have to say it because of the VFX. They were too good. इसके face के अंदर, right? All of the stuff. This was too good. But then I was also surprised कि like all of that is done by one guy. That's fucking amazing, dude. That's absolutely amazing. Amazing work by the guy. Once again, I think that's why short films लोग बहुत ज़्यादा horror बनाते हैं, because it gives you a lot of liberty to do a lot of things. मुझे ending समझ नहीं आई. If anyone has any idea, let me know. Like, what happened? मुझे कुछ भी समझ नहीं आया ending में. Nobody? Doesn't seem like it. Okay. People are hardworking. ऐसे लोग 3 साल लगाते हैं शॉर्ट फिल्म पर रिलीज भी कर देते हैं. My short film definitely does not look or sound as good. That's for sure. But again, like I said, I don't think those are the most important things. Forget, you want me to put the short film on this channel?
pact with God. Ending समझ आएगी? Yeah, that's up to you. I don't know, dude. I don't know. There's one thing I know. I'm not gonna talk about it. And I, yeah, you guys will hate it. मैं तुमको शुरू से कहता आ रहा हूँ, ठीक है? तो don't give a shit about it. All right? Would you go in some abandoned house that people consider? Yeah, I think if it's in a safe enough area, then. राधियाना से ठीक है भाई, करवा लो तुम किसी से भी. अभी मेरे माइंड में सर बताऊँ तो दो चीज़ें on top of my head. Like I just want to go somewhere. I've never really gone somewhere on the bike. I wanna do that. Second is the short film, जो मेरे माइंड में है. और yeah, these are the two things on my mind right now. The upcoming short film, the one I'm working on right now. I got more shit. Wait, this is not it. Where the fuck is it? Okay. So abhi, and third is got his own video. Yep. So abhi what I'm on is, जैसे मैं बता रहा था ना तुमको, तो hold on. So like I said before, can I get out of the frame? Yes, I think, and then the camera will focus. So what you see, okay, I can come back here, right? Yeah. Let's see if I can. What you see here, this and this, ये जो तुमको दिख रहे हैं ये वाले बड़े वाले cards, these are points in the film, right? उसके ऊपर के जो बड़े वाले cards हैं, like this one, these one जो ऊपर के level के हैं, those are, what are those? That is something which I will understand in a few words. उसके साथ जो छोटे pages हैं, छोटे छोटे, that is some more things which I will understand because this is in a few words. उसके बाद now I'm writing this stuff which will go underneath all of these. So ये जो what I'm doing right now, I don't know if I want to talk about the process or not. Again, it's weird for me. So what it is के these are moments in the film. ऊपर का, इसके जो ऊपर की layer है, that is a different way for me to understand it, और इसके जो नीचे की layer है, that is a different way for me to understand it. So there are 3 levels on which I think any film works. So like the top layer is for me to understand it and how to formalize it and visualize that. Bottom layer is the structure from which it is driving these things from. Does that make any sense? I don't know. कितने elements होते हैं writing के 11 या 13? I don't think there's anything like that. क्या रहा है? Thanks for joining stream, buddy. Long time no see. How are you? So yeah, right now I'm working on these longer things which will drive the things on top, you know. And ये जो longer things हैं, these are coming from the thing. Okay, how do I? Okay. Actually, yeah, I can do that. Hold on. So right here, what the fuck? मेरी आवाज़ आ रही है जब मैं दूर जाता हूँ तो? थोड़ी बहुत आ रही है ना? I just realized I can pull this closer. Not too much, but a little bit. So this thing, can you hear me? Kind of. So this says 3 words. It says the youth fountain, and this says same destination, different path. तो ये ऐसी चीजें हैं जो लिखी हुई हैं वहाँ पर. So I understand what they mean in the context of the story. I don't think anyone having the script would understand it, but based on that, so I read that the youth fountain, और उसके ऊपर क्या था?
same destination, different path. उसके base पे I'll write a little thing like that. और फिर इसके base में से मैं चीज़ें निकाल के I'll put them on top. Does that make sense? I don't know if it does. True. True. That's what it means. You got it, dude. Ah, fuck, you got it. By the way, I really like notebooks like these. Matlab, the fact that you can wait, hold on. I'm not supposed to. The fact that you can write something, उसके the fact that you can write something, उसके बाद तुम पूरा page rip कर सकते हो because it is one of those. Plus also you can also rip this much because यहाँ पर वो lining आती है. I love these. These things are so great, so well thought of. So well thought of these things are, नहीं? कि not only you can rip the whole page, you can also rip the page इनको छोड़ के dots को. That's fucking amazing. So well thought of, dude. So, that appreciate it. I do. हाँ, संजय सिंघानिया पे भी सेम थी. उसी के ऊपर है शॉर्ट फिल्म, by the way. What is this about? How can I say? Let's see. How can I describe it? I'm going to be honest. No, it's not meant to type, but I'm going to be honest. Or it's going to sound like a non-answer. It's really not. But I don't want to be too specific as well. But it's going to be a really honest answer. जैसे मैंने पहले बोला स्ट्रीम पे, और वैसे भी अगर कोई मैसेज सीरियसली बात कर रहा हो तो ऐसे द सेम थिंग कि एवरी थिंग दैट आई रियली राइट एंड डेफिनेटली अ शॉर्ट फिल्म आई मेक और विल मेक इज द प्रोसेस ऑफ मी अंडरस्टैंडिंग माई सेल्फ. So like इस short film के लिए the one I'm working on there, I can definitely say that's where I am right now. Honestly, that's what it's about. That's where I am right now in the journey of me understanding myself. To be honest, just being very honest about it. Yeah, I don't think I can get too specific than that. मतलब मैंने एक बहुत पहले कहीं से बात सुनी थी. I don't remember कहाँ से. Like I conjugate पे exactly. So मैं बहुत पहले कहीं से सुना था कि when you're writing something, you should feel uncomfortable कि कोई उसको पढ़े या कोई उसको देखे. That's how personal it should be. It should make you feel naked. So yeah, it's I take that to heart. I believe that to be the case. Like that's what something should be. Like कोई देख रहा है तो like you feel the load of it. So yeah, whatever I'm gonna make, चाहे वो short film हो चाहे वो एक piece of writing में, it's gonna be either that personal or I'm not gonna make it. Otherwise it's not worth making. It's yeah, it's time pass. काफ़ी नंगी कहानी लिखता है exactly. उसके बिना it's just time pass. No matter what you are doing. I mean, you can make millions and millions and billions of dollars writing a lot of shit and making a lot of films, but if they don't hit that close to the maker, I don't think they're gonna hit that close to the viewer, and then what's even the point? If you come up with कोई पड़ेगा तो comfortable रहेगा. No. I think I'll be if I'm married, I'll be fine. My wife being in a bikini if you're on a beach. I'm not that guy. Like, oh my god, why you have a bikini on? You're showing skin. I think that would be odd कि अगर वो bikini में market में घूमे. Yeah, that would make me uncomfortable, sure. तो मतलब जब भी हम वो देखेंगे तो वो सीन समट आपकी लाइफ से रिलेटेड है. साइकी, नॉट नेसेसरली लाइफ बट साइकी, द वर्ड दैट गोज ऑन हियर. I know it's narcissistic, it sounds narcissistic, but I don't know what else to be if not, I mean what else to talk about if not what goes on in here. So that's the idea.
there is an old saying, write what you know. In fact, there's a really good video about it. Hold on. What's this? Oh, मैंने earphone नहीं लगा रखा है, I forgot. Shit. तो Ricky Gervais explains it really quickly और अच्छे से. So I'll show you this real quick, and then I'll tell you something from this, the takeaway from this. Hi, I'm Ricky Gervais, and you're watching Fast Company's Creation Stories. The biggest influence, the biggest single influence on my creative process. Yeah? Who cares? Turn off. Fuck off. Who's this? Is this Spielberg? No, it's a bloke. It's a fat bloke from Reading. But this isn't my desk, by the way. My process. I'll tell you my process. Right. Okay, this is it. Probably the biggest single influence on my creative process was something my old English teacher said to me when I was about 13 or 14. He just said, write about what you know. I usually wrote about things that I saw on telly. You know, when we ever had to write a story, it was about a maverick cop or, you know, a cowboy. I always thought my stories were the best. They were more exciting. And whenever I wrote a story and handed it in, I always got it back. Too melodramatic, write about what you know. And this was frustrating because I was thinking, it's either good or it isn't. You know, and I thought my stories were so... who wouldn't like a story called Jezuk about a maverick cop who didn't play by the rules? What? Are you mad? This could be on telly. In fact, I'm sure it was. And all the other kids were getting B's and A's writing about what they did. And then one day, I just got fed up, so I thought I'd teach him a lesson. And I tried to do the most boring story in the world. My mum used to go around a neighbour's house. She was an elderly lady in her 80s. And my mum would go around, you know, every day and clean up, do a bit of shopping and cook her a meal. And sometimes I'd go around there and sort of watch, because I was bored. And it's not an exciting thing for a 13-year-old boy to watch his mum clean up after an old lady. That isn't my idea of fun. So I thought, oh, I'll write a story about that. That is so boring. And I wrote in every detail. I thought I was being really clever. Going, we went around, we came in, there was a smell of tea and lavender and mould. And my mum first started to clean the floor. The old lady said, have you eaten? The old lady said, I haven't eaten today, no. And I did it all when I thought I was being so funny and getting my own back on this teacher. And I handed it in, and I thought that'll show him. And you know, the next day, he'd marked them all, and he was looking at them, handing them out, and he got mine, and he just threw it at me like that. And I opened it up, aye. And I looked at him, and he just went like that. And it was the proudest moment of my life. It sort of taught me that being honest is what counts. Trying to make the ordinary extraordinary is so much better than starting with the extraordinary. Because... Okay. So write what you know, write what you know. Everyone says this, write what you know. Like even Tick Tick Boom movie के trailer में भी है, write what you know. Here's the thing. The reality of write what you know is, which I found out, I don't know how I found that out or how I came to understand it, but the conclusion that I reached is you can only write what you know. There is no other option. I can only say what I know, right? What that does not exist in my consciousness, I cannot say it, right? So I cannot talk about what I don't know. You can only write what you know. However, what happens is, when you try to write, when you try to come up with stories, when you try to come up with these things, you try to come up with things that you have seen, which you liked, and you like them for some reasons, which you don't really know why you like them, but you try to mimic them. So you try to make it look like something else. So it's either you write what you know, or you try to make something up, which is interesting. So, is that writing something you don't know? Well, it's writing something you don't understand. क्योंकि तुमने कोई चीज़ देखी, तुमको अच्छी लगी, तुमको नहीं पता तुमको क्यों अच्छी लगी, तुमको लगता है तुमको इसलिए अच्छी लगी, और उस बेस पे तुमने वो चीज़ लिख डाली कि मेरे को इसलिए ये चीज़ अच्छी लगी थी, ऐसे ही मैं दूसरी चीज़ लिखता हूँ. Well, you're not smart enough. Nobody is, right? So that's why I always write what you know, because there is no other option. The only other option is being wrong. You can only write what you know. I don't know if that makes any sense to you guys or not. And I'm definitely not doing a good job phrasing it. I wrote a thing about this like long back. It's not online or anything. I just wrote it for myself. So yeah. Christopher Nolan की ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट होगा जिसको देख के वो बोले that it's the finest work by me, और what do you think उसका finest काम कौन सा होगा according to you? Nolan's finest work.
Everyone loves Prestige. I'm not a big fan of Prestige. I really liked Interstellar. I really liked Interstellar. Or शुरू में people hated Interstellar. I always liked it, and I felt like a fool because every film guy hated it. But then it got re-released, and everyone loves it now. Always liked Interstellar a lot. Dunkirk भी पसंद है मुझे. I don't know, dude. I don't know. It's difficult. I really like Dunkirk. Tenet मैंने देखी नहीं. और फॉलोइंग मुझे अच्छे से याद नहीं. फॉलोइंग वाज हिज फर्स्ट फिल्म. देन केम मेमेंटो. I think it's either Dunkirk or Interstellar for me. I think it's one of those. Which I hate because I think I loved Nolan when he was working with lower budget as well. So लेकिन अभी मेरे माइंड में मेमेंटो भी मैं उस टाइम से मैं देखे ही नहीं अब तक मैं फिल्म के लिए. सो वो मेरे माइंड में अभी रिफ्रेश नहीं है जितनी फ्रेश इंटरस्टेलर है, डनकर्क है. सो कि मैं बता रहा था ना जब मैं देखने लगा था मेमेंटो में पूरी देख नहीं पाता. समथिंग हैपेंड इन बिटवीन. तो या मेमेंटो और द फॉलोइंग आर नॉट very fresh in my mind right now. I see what my issue is, but that I write, but I have not done any work in the field on my own, like my own projects. एक वो imposter वाली feeling आती रहती है, although I have been part of projects and okay. Dark Knight पसंद है. हाँ Dark Knight मुझे अच्छी लगती है, काफ़ी अच्छी लगती है. Here's one of the things that happens when, you know, let's say you want to make a film. And by the way, all of these are my ideas and don't, take that for what it is, you know. These are the things that I believe to be true. Even theater and performance arts भी, पर पता नहीं अभी वही confidence नहीं है to start my own thing. All right. I'll get back to it because yeah, something's going on in my mind. So let's say you want to make a film, right? Oh, okay. So yeah, we have a film that we want to make. Film में there's a lot of stuff going on. You know, visual storytelling की हमने बात करी है almost हर में film में. There's the writing element, there's the musical element, there's the acting element, there's the direction element. बहुत सारी चीज़ें होती हैं भर भर के. There's the technical visual element, there's the technical audio element. बहुत सारी चीज़ें. लेकिन अभी writing के तरीके से बात करते हैं. So let's say you write something. This is your base that you have written. Right? There's the base that you have written. Now, so far this is a story, let's say. मैं ये नहीं कह रहा ये process है, like I go through these stages. I'm trying to explain something else. You'll see along the way. So you've written something. So far this is just a story. ठीक है? It's not a film right now. It's a story. It has a beginning. It has an end. It does have a middle, somewhat of a middle, right? So right now it can be a novel. It can be a short film. It can be a story of a game. It can be an audiobook. What are the other ways of telling stories? It can be any of these things. It can be a web series. It can be anything, right? Or it can be a film. Now, ये जो पीछे अभी वर्क चल रहा है ना, जो तुम पीछे देख रहे हो, जिसमें मैं कह रहा हूँ अगर इसके तरीके से देखें, सो इस स्टोरी को देर आर अ लॉट लाइक इन्फिनाइट अमाउंट ऑफ एलिमेंट्स विच आर फीडिंग दिस स्टोरी. ठीक है? एंड आई एम अज्यूमिंग कि ये स्टोरी अब जिसने लिखी है उसको ढंग से समझ आ चुकी है, बिकॉज दिस इज व्हाट हैपेंस विद मी व्हेनेवर आई राइट समथिंग. इट्स मोर दैट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इट. ओके? It's not I'm trying to make things up. Is I write what is narrated to me. Yes, I'm a copycat. And
उसके बाद जो लिखने के बाद जो प्रोसेस है वो ये है इन सबको इन्वेस्टिगेट करना कि ये सारे चीज़ें क्या हैं विच इज़ फ्यूलिंग दिस स्टोरी. वंस यू इन्वेस्टिगेट ऑल ऑफ दीज थिंग्स, उसके बाद यू कैन कम अप विद एन better understanding, a real understanding. Does this have to be a short film? Does it have to be a novel? Does it have to be a game? Does it have to be an audiobook which is similar to a novel, or a web series, or a film? फिल्म, शॉर्ट फिल्म सिमिलर होंगी, नॉवल अलग जगह होगी, गेम अलग जगह होगी, राइट. नॉवल और ऑडियो बुक सेम होंगी, फिल्म और शॉर्ट फिल्म सिमिलर होंगी, वेब सीरीज भी, और गेम इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट मीडियम, राइट. तो उसके बाद इस स्टोरी को बेस्ट कौन सा फॉर्मेट सर्व करता है. इट कुड इवन बी अ पेंटिंग, बाय द वे, इट कुड बी अ पेंटिंग, राइट. उसके बाद ये जो स्टोरी लिखी है, वंस यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स विच आर फ्यूलिंग द स्टोरी, विच इज मेकिंग द स्टोरी वर्क, these are the things that the story is trying to say, and all of these things are literally not all of these things, but most of these things are entire stories or novels on their own, right, or theories. So once you understand everything that is fueling the story, now you can make the decision, kyunki you understand these different crafts. You understand, let's say you understand how a game works, you understand how a painting works, you understand how a short film works, a novel works. Then you can make a decision कि okay, this will work well with film. उसके बाद आता है सारा महफिल वाला सीन जो हम महफिल में कर रहे हैं कि okay, this was our story, wait, okay, this is our story, now we are gonna translate it, right, we're gonna take this, translate कर रहे हैं into something which is more like let's call it VS, visual story, or a film story. So you don't just take a story and make a film on it. No. You translate the story into something that works good for a film, and that is done after the decision that you have made कि अच्छा, a film is the best way to portray the story. मैं ये लास्ट शॉर्ट फिल्म के लिए करना चाहता था, मैं कर नहीं पाया था बिकॉज पहले बहुत लंबे समय तक चीज़ें हो नहीं रही थी, उसके बाद हुई तो काफ़ी रैपिडली हुई. आई वॉन्टेड टू राइट अ शॉर्ट स्टोरी, यानी कि जो एक्चुअल स्क्रिप्ट थी दैट वाज लाइक 15-16 पेजेस. सो आई वांटेड टू राइट अ शॉर्ट स्टोरी लाइक 100-120 पेजेस ऑफ दिस स्टोरी, नॉट टू बी, लेकिन इन द फॉर्मेट ऑफ अ नॉवल. आई टेल यू हाउ इट्स डिफरेंट. Not to not for someone to read it, but for a better understanding of these elements, and then translate it into a short film. Does that make this, any of this makes any sense to you guys? I hope it does, because that's the best way I can explain how you move from a story to the amplifier, which could be the film or the game or anything like that. I'm gonna wait, and I'm gonna come back in half a second. Washroom nahi ja raha, screen मारो to prove the point between stories. This right here, समझता है? Okay, this right here, ये बुक में पढ़ रहा था, The Idiot. मैं मेट्रो में था, मैं ये बुक पढ़ रहा था, and this one line of the very first page, like I was just starting to read this book, right, explained me the entire difference, and I think it will do the same for you. I don't know where exactly the line is. Let me just find it real quick. Okay, I'll just read the first page, okay, real quickly, don't worry. At 9 o'clock in the morning, and towards the end of November, the Warsaw train was approaching Petersburg at full speed. It was thawing and so damp and foggy that it was difficult to distinguish anything 10 paces from the line to the right or the left of the carriage windows.
Some of the passengers were returning from abroad, but the third-class compartments were most crowded, chiefly with people of humble rank who had come a shorter distance on business. All, of course, were tired and shivering. Their eyes were heavy after the night's journey, and all their faces were pale and yellow to match the fog. I think this is the line is upcoming. In one of the third-class carriages, two passengers had, from early dawn, been sitting facing one another by the window. Both were young men, not very well dressed, and traveling with a little luggage. Both were of rather striking appearance, and both showed a desire to enter into conversation, if they had both known what was remarkable in one another at that moment. Right there. ये एक line told me the entire difference between how a film works, how a novel works. उसके बाद I have realized more differences, more things, but fundamental जो difference है वो मुझे ऐसे समझ आया. तो ट्रेन जा रही है, रात को बहुत ठंड है, बहुत सारे लोग बैठे हैं, and again the last line was both were of rather striking appearance, and both showed a desire to enter into conversation. If they had both known what was remarkable in one another at the moment, they would have been surprised at the chance which had so strangely brought them opposite one another in a third-class carriage of the Warsaw train. तो इसमें जो author है Dostoevsky is revealing to us, the fact कि दोनों conversation में घुसना चाह रहे हैं, right? They have the willingness. If they had both known what was remarkable in one another at the moment, so like, okay, there is something remarkable, he's revealing to us that, they would have been surprised at the chance which had so strangely brought them opposite one another in a third-class carriage of the Warsaw. And he's explaining to us that there is something weird, there is something remarkable, and oh, what a surprising fact it is, what a surprising coincidence, or what a big thing it is कि दोनों साथ में हैं. You cannot convey this in a film. You just cannot. You can only do it in the novel or a book or something like that. Fuck off, Mukul. What's up, dude? You can only do this in a novel, not in a book. Unfortunately, I didn't read it read this to completion. Otherwise, I would have been able to comment better on it. There are more differences. बट मेरे ख्याल से अल्टीमेट लेवल जो स्टोरी टेलिंग होती है वो इधर ही होती है इन द नॉवेल्स. फिल्म्स, वेब सीरीज, शॉर्ट फिल्म्स कैन नेवर मैच अप टू दिस थिंग. बाय द वे, ऑडियो बुक्स ऑल्सो कैन नॉट. Nothing will ever come close to the written word. That is absolutely clear in my mind. Nothing will ever come close to the written word. Absolutely. I can get into why. I've given a nice example of painting. Discord पे. Okay. Wait. So the thing about the painting is it doesn't work in the dimension of time. It only works in space, or one space time, so to speak. You know? Wait. Matthew, something odd is going on here, but I can't quite put my finger on it. Well, there's me, there's her, the dog, the mirror, and whoever those other people in the reflection are. The Stations of the Cross, the fancy chandelier, the oranges, the gargoyles, and this weird praying lady. From the outside looking in, nothing seems that out of the ordinary, right? But you see, when considering that what we're looking at is a painting by Jan van Eyck, you'll quickly realize that nothing is ever what it seems, because this lady is probably dead. What? I mean, we're technically all dead. And while that is a matter of fact, that all of the people seen here in the artwork, including our furry friend and the mysterious figures in the reflection, have long moved on, there is a very real possibility that even at the time that this famous portrait was painted, this woman was no longer with us. Have a closer look at this chandelier. Notice anything off about it.
On the left side of it, hovering over the shoulder of Mr. Arnolfini, we have what appears to be a candle and flame. However, pan over to the right and the motif seems to have taken a turn for the worse. The remnants of wax. A full life ahead on one side and one that has perished on the other. Very curious. And what about that mirror with the crazy reflection? Notice anything about it? Scenes from the Passion of the Christ. And once again, on the left, Christ as he lived. On the right, Christ in death. And if you're thinking, oh Matthew, this is conjecture, this was a wedding portrait, you might be right. But consider for a moment that Jan van Eyck was a perfectionist and that everything that he ever put into a painting was intentional. This was a man who could paint with such precision. Particles of light could be seen bouncing around inside crystal prayer beads before being cast onto a wall. Have a look at the reflection of this orange. Each and every individual grain and knot on these wooden patterns, and we haven't even gotten to her dress. A combination of elaborate textiles met with soft furs and a silky headdress. Every single piece of this picture a premeditation, calculated to the finest degree, which lends to the possibility that yes, the colour of her dress might mean hope, and that their bed might symbolize a consummation, the mirror in the shape of an eye, the eye of God who watches over their union. Is she pregnant? Probably yes. And the list goes on and on. But why then the symbols of death? A depiction of Saint Martha, patron saint of the housewife, sitting on a dragon overlooking two gargoyles strategically placed to ward off evil spirits, and we're left scratching our head as to why she'd need that protection at all. For safe passage to the other side? Maybe. And if none of that has convinced you at all, what about Mr. Arnolfini himself? A keen sense of fashion, or maybe he was mourning a death. Are? What? Okay. Hania versus Mahira India. I don't know who these people are, dude. So okay, the thing with paintings. Now, see, the more I think about it, I start feeling like the crafts go lesser. Anyways, I do think still this is the best storytelling device ever. Nothing will beat it. Like even in the future, I don't think anything beats it. Maybe you can say कि कभी जाके जब तुम्हारा न्यूरोलिंक जैसी चीज़ें चल रही होंगी and you just connect your own neuralink to the thing and then it gives you all those emotions and feelings जो कि characters को होने चाहिए and you'll do all of those things जैसे वो साइबरपंक में होता है brain dance, right? Maybe I don't think so. I don't think even that beats books, novels. The name of the book suits Nilesh. And that comment actually reveals about you. So, जहाँ तक painting की बात है, so what is happening in the painting? The painting exists in one space time, right? लेकिन it exists in one space, but it doesn't exist in one space time in a different way. Why? क्योंकि you can see the painting, but उसके बाद you are manipulating your attention and working across time. जिस तरीके से बंदा वीडियो में कर रहा था, right? You go here, check this. You go here, check this. You go here, check this. So this is how it's. This is how this is working. We have a limited amount of space, ठीक है? And we are using our attention across time to juxtapose things एक दूसरे को to looking at the contrasts and points of interests. So the painting exists in in one space time, but its interpretation is done through time in a continuum, right? Does that make any sense at all? Because I'm trying to come up with it as I try to understand it better right now. Like I'm riffing off literally. मैं पूरी वो नहीं देखूंगा अभी. Yeah, hold on. क्योंकि again I'm trying to get to something. So this is different. I've seen this painting before, by the way. I've seen a video about it, I think. This is different in a movie, right? क्योंकि movie is working in the field of time as well. So the movie is controlling your attention much more than a painting is. Horror adventure genre में do you think movies are better than novels? यार मैंने हॉरर नॉवल कोई पढ़ी नहीं. देयर इज़ अ डिफरेंट रीज़न ब्रो जो मैं कह रहा हूँ ना.
I think as a storytelling device, novel would be better. Like I have laughed out loud reading. मुझे जिंदगी में नहीं लगा था मैं कभी करूँगा. I have laughed out loud for a long time. जितना मैं किसी मूवी को देख के नहीं हंसा बहुत टाइम में पढ़ते हुए, मैंने जिंदगी में नहीं सोचा था कि ऐसा जिंदगी में कभी होगा. Like because this I'm not a reader. You need to understand this. I'm not a reader. So when you're reading, this is me. You certainly will not deny Gravel began directly addressing Brodowski, who was listening to him intensely. So I'm reading like this. I'm not a reader. I don't know how to read. So reading something and like literally laughing, मतलब बुक को रख के थोड़ी देर हंसना, and then going back and then just thinking about it and laughing again, and then continuing to read. This concept never made sense to me, but then it happened to me. You know? So yeah. The reality is, जो मैं कह रहा हूँ ना, नीलेश, read the Fight Club, you already have read the Fight Club, you already have watched it. फिर compare करके बता, better बताना. नहीं, तब भी नहीं होगा. नहीं. Okay, this is the best example actually probably. मैंने नहीं पढ़ी Fight Club, right? Fight Club में this is going to explain to you completely जो मैं कहना चाह रहा हूँ. This is absolutely going to explain it to you. Oh my God. Listen to this. So Fight Club में एडवर्ड नॉर्टन के बहुत सारे वो आते हैं, वॉइस ओवर्स, राइट, नरेशंस. What was the okay, listen. The previous occupant. तो फाइट क्लब में ये जो नरेटर होता है, ही इज रीडिंग अबाउट एन आर्टिकल, राइट, जहाँ अलग अलग ऑर्गन्स बोल रहे होते हैं और नरेटर का हमें कभी नाम नहीं पता, एंड ही डजंट हैव दैट, एंड देयर इज अ होल डिफरेंट फिलॉसफी, यू नो. Had been a bit of a shut-in. Hey man, what are you reading? Listen to this. It's an article written by an organ in the first person. I am Jack's medulla oblongata. Without me, Jack could not regulate his heart rate, blood pressure, or breathing. There's a whole series of these. Hello Lash, how are you? Thanks for joining the stream. हाँ, मैंने भी बस दवाई खानी है स्ट्रीम करने के बाद. I am Jill's nipple. No, it's not even that. It's not even that, Mukul. Jack's colon. I am Jack's raging bile duct. I am Jack's cold sweat. I am Jack's complete lack of surprise. I am Jack's smirking revenge. I am Jack's wasted life. I am Jack's inflamed sense of rejection. I am Jack's broken heart. You see, you understand now? You understand now? You see what I'm saying? This is why this is the best. This is why nothing beats storytelling than the written word. Because when you are reading this, you're not listening. When you're reading this, you're not listening to Edward Norton's voice saying, "I am Jack's da 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 da." You are saying, you're listening. You hold on. Understand this. What I'm saying. You are listening yourself in your own voice, thinking, "I am Jack's broken heart." That's what's happening. The written word is being implanted within you. You hear it, and you are the one who say it, and you identify with the written word. That's what makes it the best. No movie, no web series, nothing will ever be able to touch it format wise. Dude, Mukul, I'm gonna you know what? Fuck off, dude. I honestly have no time for stupid shit. There you go, dude. Fuck off. That's what makes it different, and that's what makes it better than anything. So I don't think, because it's literally entering your psyche directly. But तुमने मूवी का एग्जांपल क्यों दिया ये जैक वाला?
Wait, I don't think you got what I was saying. That's what I'm saying. क्योंकि Fight Club is a novel adaptation, right? So how would you adapt it? You would add the voiceover, right? Inflamed sense of rejection. I am Jack's broken heart. I am Jack's broken heart. हम बात करें स्टोरी टेलिंग की और अलग अलग डिवाइसेस की, ऑफ स्टोरी टेलिंग, ऑफ राइटिंग एंड फिल्म मेकिंग, ये सारी चीज़ें. सो व्हेन यू वॉच अ मूवी यू लिसन टू एडवर्ड नॉर्टन से आई एम जैक्स ब्रोकन हार्ट, बट व्हेन you're reading, right, when you're reading the book itself, you don't hear Edward Norton say I am Jack's broken heart. You see the words and you think and you feel and you hear your own voice say I am Jack's broken heart. That's what makes it the best. So that's why I'm saying the words are implanted in your psyche. You observe yourself saying the things by the person, but you're not saying them out loud, you're thinking them. So it's almost like it's your voice as well. Does that make sense? So it's directly being implanted within you. I hope it made sense. That once again, this is, and the more you read, the good, the better things you read. Yeah, that's why कुछ चीज़ों में बुक्स अच्छी स्टोरी टेलिंग कर जाती हैं. नहीं, नॉट कुछ चीज़ों में. Technically, a storytelling cannot be better than through the written word. I keep literally picking up the written word. You cannot do better than the written word. So, when they say novels are better, they are technically better. People don't understand it. I have never heard anyone say it. Just my theory. I could be completely wrong, but they are technically better, and you cannot get technically better than this. You cannot get any closer to implanting the thoughts, the ideas in the psyche, because you see the words and you hear yourself saying the words and thinking the words in your own voice. हम कोई मूवी देखते हैं तो we identify with the characters, but no, here we are saying the characters' dialogues. We become them, right? And to make it interesting to ourselves, we read it in the tone, right? We read it in the style of the character that we think the character would be like. So there is also a co-interpretation. एक जगह जो बंदे ने लिखा है, एक जगह what you are getting from those words, and you're reading it in that style what you think that would be like. And तभी तो मैंने दीपक के सामने ऐसा बोला नहीं, dude. But yeah. And that's very sad for me कि movies can never reach this level. That's very, very sad. That's very sad to me. Because movie is a hybrid. Movie, web series, short film, it's a hybrid. Or what I'm telling you right now is the deepest technical thing about storytelling that I know. क्योंकि बहुत से लोगों को like I respect Jordan Peterson a lot, right? His understanding of stories and stuff and psychology. I heard him say on a podcast well, yes, reading is extremely valuable. Listening to the audiobook is also just as valuable. It's not. It's not. It's absolutely not. Because it doesn't have this impact that these books have. And oh my God, I'm not fucking. I don't want to say the book's name. I don't want to say the book's name. For anyone who wanna know, I've said that about that book before. For some people it's Gita, for some people it's the Bible, but for me it's that book. I'm not going to say what book it is. I'm really not going to. So there's no point. I'm just saying that to give you the idea, okay, the better books you read, the better things you hear yourself think and say and act out, the better you understand what I'm trying to say. Finally, someone said that about audiobooks. Audiobooks are good as an information gatherer or information intake. They're good for that thing, and that's about it. They're really good for that. I'm lazy, I don't want to read right now. Fuck it, I'll put on an audiobook. Audiobook in a story is a worse experience than movie. I'm not. Oh my God. Has anyone read 1984 right now? Has anyone read 1984? Here, anyone?
Okay, I do have another example, by the way. Book में Animal Farm, right? I was reading it, so इसमें and this is about the communist uprising of animals in a farm, right? तो इसमें they come up with a song, right? And it says, I'll just read it. I have taught you the tune. You can sing it better for yourselves. It is called Beasts of England. Old Major cleared his throat and began to sing. As he said, his voice was hoarse, but he sang well enough, and it was straining tone, something between Clementine and La Cacorasha. The words ran. तो अभी हमको author ने जॉर्ज ऑरवेल ने tone बताई है. Tone is something between Clementine and the other song which I don't know. Clementine भी गाना मुझे नहीं पता. I just know from the movie Eternal Sunshine of the Spotless Mind, it goes something like, oh my darling, oh my darling, oh my darling Clementine. It goes something like this, right? I don't know anything. दूसरा गाना मुझे पता ही नहीं. पहले गाने का मेरे को ही पता है. I know the tone is something like this. उसके बाद I can read the song. And how I read the song? Beast of England, beast of Ireland, beast of every land and clime. Hearken to your joyful tidings of the golden future time. Sooner or later, the day is coming, tyrant man shall be overthrown. And the fruitful fields of England shall be towed by a beast alone. Rings his shawl. So, you see what I'm saying? You understand what I'm trying to convey? So, it's a very collaborative thing to create an experience within me. And 1984 में ruin नहीं करना चाहता किसी के लिए, otherwise that, क्योंकि मैंने वो audiobook में सुनी थी, and that has been a frightening experience as you move towards the end. I don't want to spoil it for you guys, क्योंकि मैं बता भी दूंगा, it wouldn't feel as big a deal as it really is. I can only imagine if I was reading it, dude. I can only, oh my god. Exactly, Shubdeep. Oh my god. 19. So here's what when I अरे मैं तो एक पैरा बार बार रीड करता हूँ. आई एम वेरी स्लो रीडर. ऑडियो बुक में आई कांट फोकस होगा ही नहीं मुझसे. आई एम ऑल्सो एन एक्सट्रीमली स्लो रीडर, एंड दैट्स व्हाट आई हेट अबाउट माई सेल्फ. आई विश आई वाज मच बेटर एट रीडिंग. आई एम हॉरिबल एट इट. बचपन में स्कूल नहीं गया मैं, सो दैट्स वाई. अच्छी बात है स्लो रीडिंग. You get through things very late because of that. So I want to talk about that 1984 thing. I can say this. Like मैं आज के चक्कर में नहीं कर रहा है because of the things we are talking about right now. I think ये बात मैंने दीपक को अलग से बोली है. I think ये बात मैंने स्ट्रीम पे बोली है. I think ये बात मैंने सिद्धू को I think ये बात मैंने काफ़ी लोगों को बोली है. 1984 जो किताब मैंने पढ़ी, ऑडियो बुक में सुनी, आफ्टर दैट आई नो फॉर अ फैक्ट दैट आई हैव चेंज्ड फॉरएवर. आई नो दैट फॉर अ फैक्ट. In how many ways? I don't know. At least in one. But I can only imagine, dude, if I was reading it instead of listening to it. By the way, the audiobook was very well as an experience. But oh my god, if I was reading it, it would have been different. Or Crime and Punishment. When I was reading Crime and Punishment, this is something I did. After Pride and Prejudice, next read will be 1984 pakka. Once you're done with it, we'll talk about it, Lash. Another thing. Fuck, क्या कहने वाला था मैं? Crime and Punishment. When I was reading Crime and Punishment, तो उसमें everyone knows this much about it. So उसमें there is this guy. The guy is planning a murder, and in the first part, right, and he ends up doing that murder.
वो मर्डर प्लान कर रहा होता है एक औरत का, एक लेडी का, हु इज दिस greedy old bitch, right? She's horrible as a person, and the guy is planning this murder, and because बंदे के पास पैसे नहीं है, बंदा is intelligent enough, and बंदे की back at home life is horrible. उसकी जो मेरे पास है सिद्धार्थ पढ़ी है, हरमन हेसे की मैंने पढ़ी नहीं अभी. So and उसको he receives letters from his family at home कि like how his sister is being forced into a marriage for money, and in the letter it says कि वो बंदा बहुत पैसे वाला है, एंड इवन तेरी पढ़ाई में भी उसका पैसा काम आ जाएगा और शिट लाइक दैट. एंड उसकी मदर ने उसको लेटर लिखा है, and you can in the letter you can see how his mother is trying to hide the pain in the letter, and that's oh my god, the writing like that. You're reading it as the character, and also you're reading it as the mother writing it, but you're also seeing that the character is seeing the mother is trying to hide the pain behind the letter, so she's trying to make it sound nice actually. Oh well, ultimately it's all very nice, and you are reading it as all of that. Not only that, uske end mein, whatever it says in the end, well, if you were here aisa shayad kuch, and then she goes, the mother goes, well, what would you be able to do anyway? And you feel that sense of helplessness for the protagonist, like just reading that, because it's like when I'm reading it, it's like it's being said to me, right? Not only that, लेकिन जो मैं बात पॉइंट बनाना चाह रहा था, ये नहीं बनाना चाहता मैं, ये बता रहा हूँ. तो by all of this he can justify it in his mind somewhat कि okay, I'm gonna kill the old rich bitch. वो जो old rich bitch है, she also has a sister or some relative, और वो जो उसके साथ रहती है old rich bitch के साथ, and वो जो relative है, she's slow in the head, she's simple in the head, and she's very nice. ठीक है, तो उस बंदे को बाई चांस पता लग जाता है कि एक समय होगा जब ये लेडी, जो सिंपल हेडेड गर्ल, विल नॉट बी विद द ओल्ड रिच बिच, एंड ही हैपन्स टू ओवरहियर इट इन सम रैंडम प्लेस जहाँ पर वो होती नहीं. सो ही टेक्स इट एज अ साइन, ओके, नाउ आई गोटा किल द ओल्ड रिच बिच. ही गोज इन देयर, he kills the old rich bitch with an axe, right? He goes in and he tries to get the money वहाँ से. Someone walks in, and I'm reading that, right? I'm reading that at this is the point I'm trying to get at. I'm reading that someone walks in. Who can walk in? The old rich bitch lives with the simple lady. Simple lady who herself is tortured somewhat by the old rich bitch. And our guy, our protagonist, the killer, he hears it, he gets back into the hall, and he sees the simple lady. And the simple lady is in a state where she doesn't even scream, yell for help. She's in shock or in this utter confusion, in this disruption, in this chaos in her mind. And then our guy, our protagonist, walks in, and I'm reading this, and then वो उसको देख के ही गिर जाती है साइड में, and she's on the floor sitting, एक दीवार का टेक लगा के. And our guy, the protagonist, he has the axe with him, right? And he's been battling his own conscience, right? कि मैं ही करूँ नहीं करूँ, like this is so horrible, मैं ऐसा सोच भी कैसे सकता हूँ, ये सारी चीज़ें. He's battling his conscience. Now he's already killed the old rich bitch. The simple-headed lady is in front of him, sitting down. He lifts up his axe, and the simple-headed lady does not even lifts her hands up to protect herself. मैं ये पढ़ रहा हूँ, and then I stop.
I stop for a second. Because in my head, I am not ready to read about the character जिसके साथ मैं इतने समय से था, kill the simple-headed lady. I'm not ready to read that just yet, so I just take a moment. And that's another thing about novels that will never be replicated by the movies, because in movies, in shows, in audiobooks, what you can do is you can hit the pause button, and what that does, it stops the movie time, it stops the music, it stops the acting, it stops those things. But नहीं, जब मैं पढ़ रहा हूँ, जब मैं पढ़ते पढ़ते रुका, I stop injecting that information or going through that information. That's fundamentally different. Because when I hit pause on a movie, the character is just like this. That seems weird. और जो music अभी rise हो रहा था, that is also just stopped. And when I hit play again, music वहीं से शुरू हो जाएगा और वहीं से शुरू हो जाएगा. It feels fake in that sense. But when I'm reading that, and I'm like, he lifts his axe up, the simple-headed lady does not even put her hands up to protect herself, and I'm like, I pick the book back up again. That's what it is. He swings the axe right on her head and ends up killing her as well. So the novel works on my time in a fundamentally different way than a movie can ever do. I hope that made sense. Because again, like I said, I'm not a reader. I don't know how to read. But I consider myself a self-aware person. So I'm always aware of the things that are going on with me. It's directly related to my work. I have to be. So these kind of experiences, you can never get out of any other medium. That's why I said पहले जो मैं कह रहा था. अभी तक I haven't given the best example, and I'm not going to, because that book is too difficult for me to talk about. Don't admit yourself. Essay, what do you mean you can't read? Comments पढ़ते हो सबके अच्छे से. You can read English, so you're a reader. Yeah, I guess. I mean, I can never make a habit of reading. I read a lot of books and then I, just put them aside and stuff like that. Like idiot, I haven't read the whole thing. Animal Farm, I've just read 3 chapters. Crime and Punishment, I think by me talking about the book, you can say that I really like the book, but I haven't read that completely still. Lash, screw you. I see what you're doing. Missed. विंद्रा थेरेपिस्ट लाश है तो कैसे बन गया? ट्रू. ऑडियो बुक में भी तो यही होगा. ये तो मैंने पढ़ा था, मैंने बोला भी था. यू आर राइट अर्जुदीप. तभी तो मैं कह रहा हूँ ऑडियो बुक कैन नेवर बी एज गुड. दैट्स व्हाई शुरू से आई एम सेइंग दिस कि नथिंग कैन बी एज गुड एज द रिटन वर्ड एज अ डिवाइस फॉर स्टोरी टेलिंग. क्या डिलीवर होगा लैश? अच्छा, ऑडियो बुक के ऊपर वाला. सॉरी, आई वाज समवेयर इन माय हेड. जहाँ हम स्टोरी टेलिंग में बुक्स, फिल्म्स एंड ऑल को रेफर करते हैं, डू यू थिंक म्यूजिक इज ऑल्सो वन ऑफ देम? म्यूजिक, ओके, म्यूजिक इज टोटली डिफरेंट. Music is totally different, I think. Matlab, it works in the same space, but music is pure emotion, right? No,
I don't know. As I heard someone say, emotion ko energy in motion. That's what music is. MSTs तो अक्टूबर में ख़त्म थे और सेमेस्टर एग्जाम्स आ गए. अरे 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 ओहो. COD परसों रिलीज होगी कल. COD कोई मूवी है क्या? So yeah. Anyways. But these are the things that that make me stuck. Like stream pay, we can talk about anything and I can keep babbling on and on and on. But when we're talking about stuff like this, I don't know if you've noticed this before. I think you may have, if you have been around enough for these kind of conversations, that I always stop talking for at least seconds. I don't want too much dead air, but yeah, because I don't want to stop my mind from going here and there to usually that is what's happening, right? My mind goes here and there, but then again I'm thinking of something to say on the stream in a fucking around manner. I don't want to do that when we're discussing this. I want to let it go where it's going. डेविड कौन सी मूवी है? बिंद्रा ने वो करी है. Yeah. क्या टाइम हो गया है? मुझे दवाई भी खानी है. ओह 1:30 बज गया. Oh, Lash, I have a game about Hogwarts. MFT ले रहे हैं? नहीं. Hogwarts Legacy, that was the popular game in the Harry Potter universe, जो कि अभी कुछ समय पहले आई थी. I just downloaded it. You bought it या free है? I have this subscription जिसमें वो आती है. Okay, that sounded weird. But yeah, Xbox का Game Pass की. I've never played it or seen any video on it, so I thought this would be fun. We can play it on stream if you guys are into it. उड़ सकते हैं झाड़ू पे बैठ के. I hope. I think so. How do I see a trailer or something? बढ़िया गेम है. अच्छा अच्छी है. I don't know. I haven't. Can I not see it? Oh, this must be the trailer, right? Yeah, please. You've read the books. Okay. You've loved the movies. अरे? Now, put yourself in the center of the magic. Defense against the dark arts. Mandrakes. Hogwarts. I don't love it. They're relying too much on the movies to, Watch them on the big screen. Now, experience them for yourself. Relive the magic and fantasy of the world created in the Harry Potter books as you explore his world. I think I have a really good game. I mean, this seems really good. Tell me why. खेली तो मैंने ये भी नहीं कभी. But these are like really good storytelling games, I think. Like stream पे everyone loved जब हमने The Walking Dead खेली थी, right? मुझे lore समझा देना. I don't think there would be that much regarding the lore. Movies भी तो book पे ही थी. हाँ. Tell me why. Tell me why अच्छी game है. Do you know? You like Disco Elysium, I feel. Okay. This is based on movies. इसमें भी details and characters missing होंगे. Well, in nothing but a heartache. Okay, you know what?
We can see. Tell me why. Okay. So it should be good, right? Tell me why it should be good then. पहले टेल मी वाई का वो देखो एक बार. I think tell me why. What do you think? More gaming on stream, guys? Do you think so? मैं गाना बोल रहा था 99 नहीं देखा नहीं देखा. Whoa, I just got hit with a flood of memories. Love you, Mom. You seeing what I'm seeing? Mom? Allison? Yeah. It doesn't matter that they don't believe us. We all believed that what happened that night was self-defense. But we couldn't be sure. It doesn't matter that they kept us apart. Brother, sister, we look out for each other. It doesn't matter that finding the truth feels Oh, you're a retard. You would probably say the same thing about The Walking Dead as well. impossible. We're all done with fairy tales. The only thing that matters is you're my brother. And the This only seems- way to move forward is to keep looking back. We've been getting these visions whenever we see or hear something really emotional. Everything we thought we knew about Marianne just got thrown out the window. She loved you. She attacked you. We both saw it. I thought coming here would be closing a chapter of our lives. This seems interesting though. मुझे वॉकिंग डेड बहुत बोरिंग लगी. आई डोंट नो सबको क्यों पसंद आई स्ट्रीम पे. आई डोंट नो. कैंडी क्रश खेला. लैश. Hey, we're back with another episode of So no Hogwarts? Before You Buy. That show, we give you some straight up gameplay and our first impressions of the latest. So yes, you can fly out. It's releasing as usual. It's me, Jake, and today we're talking about Hogwarts Legacy. This is the much hyped, much talked about, much argued about, big open world Harry Potter game that has been in the works for many, many years now. Remember back when it leaked and then we didn't hear about it again for a long time? That was crazy. Anyway, usual spiel here. These are first impressions as we have gotten a review code, but we're able to get about 25 hours in and wanted to give you guys the First खेल ले, I would say. heads up since people are already dropping cash on this. And this footage was captured on PlayStation 5 and is spoiler free. I'm happy to report that Hogwarts Legacy is a really solid open world action adventure game. I think the more jaded gamer will find some stuff that they've done a million times before in other games and maybe roll their eyes here and there. But I think Harry Potter fans that have been waiting for like the end all be all wizard game, I think this is pretty darn close. I think the developers that worked on this game took the Harry Potter franchise and ran with it, giving us new things and expansions way more exciting than even the more recent spin-off movies in my opinion. Now the game is a bit glitchy, but it's also charming and really fun. It distinctly feels like a Warner Brothers open world game, if that makes sense. Not like Gotham Knights. I didn't really like that game. Think more like Arkham Knight, Mad Max, or Middle Earth Shadow games, but like way bigger in almost every sense. So where it starts, you're a fifth-year transfer student. It's a great jump. तो अच्छा बिंद्रा तेरे को हॉगवर्ट्स हॉगवर्ट्स कह रहा हूँ हैरी पॉटर का लोर कुछ भी नहीं पता. जितना मुझे को समझ आएगा मैं साथ के साथ बता दूंगा. Off point to kind of experience it as new through the character's eyes and also not be like a little baby kid. You're right in the middle. And you're under the tutelage here of a professor who was supposed to get you up to speed with other fifth years and get whisked up in a much bigger adventure that involves way more than just going to school and learning how to make potions or whatever. You create your own character, any type of person you want, total freedom, which is nice, but the face options feel a bit awkward and limited the way they're implemented. And keep in mind, like total freedom, but like in the realm of realism, so you can't make a bug-eyed alien person or anything with sliders. It's not bad though because there's a lot of loot and that's where the custom character stuff really shines, like where you can really express yourself. One thing to note, you can जिसमें सट्टा खेला था. सट्टा किसमें खेला था? What do you mean? your voice pitch. So for my character, since I know, I'll be honest, I have a bit of an annoying voice in real life, I decided to kind of up the pitch by 1 point like the game lets you, and it resulted in a very tinny, modulated sounding voice. So be warned and be careful with the voice choices here because your character does talk quite a bit. Now, you're thrust through a really cool intro and then you slowly get into the flow of the game. Missions. Everything is a mission. Classes are kind of just side objectives or story missions that are part of the flow. So the game isn't broken into like a school thing every day. So if you weren't paying attention, I'm sorry if you were looking for like a Persona or Bully type school simulator. This isn't quite it. Still, you get the feel because class moments are interesting. The new professors are pretty decent and the game actually establishes a बिंद्रा हैंड ड्राई. बिंद्रे एक अनाथ होता है जिसका माँ का एक तरफा आशिक होता है. Okay. वो खेलो ना गाटेक फोन. अरे इतनी सारी अलग अलग चीजें एक साथ कैसे? Why don't you play Cyberpunk हैंड ड्राई?
We can play Cyberpunk together, guys. Cyberpunk. I think everyone liked Cyberpunk. जब थोड़ी सी खेली थी stream पे. I think everyone liked it, right? We can do a playthrough completely. Complete playthrough of Cyberpunk. And together, no. You can watch me play. It's not multiplayer. The telephone game. What is this? What is this? Is this something weird, dude? Are you getting me into something weird? Normal. मैं कुछ भी नहीं पढ़ रहा हूँ. I'm just a start. अच्छा नहीं, it's with many other people. Okay. Gotcha. कौन है हिम्मत कंटिन्यू कर. So okay, you know what? I'm gonna start a poll. More gaming. On stream. Oh, I cannot click on yes? Huh? Oh, okay. Gotcha. Kind of have an idea, yeah. कोई एक बंदा देख रहा है जिसने वोट नहीं करा. How dare you? Okay, more gaming on stream. ठीक है. भाई फिर अपनी तरफ से भेजो क्योंकि आई प्लेड दिस राजाना की स्ट्रीम पे मज़ा आया था बहुत. ओके. डिस्कॉर्ड कुछ नहीं आया डिस्कॉर्ड पे. पार्थ तेरी तरफ से कुछ नहीं आया. शुभदीप आई मीन. लैश नहीं यार, मेरे को सेकंड मूवी के बाद आलस आ गया. अब एनिमे शुरू कर दिया मैंने. एंड पे स्क्रिबल पे नहीं यार, नहीं फक ऑफ. थोड़ा बहुत खेल सकते हैं ठीक है, लेकिन I just like to be engaged in the story games में यार. I just like to be engaged in the story. फिर चाहे हम हॉगवर्ट्स लेगेसी खेल सकते हैं, हम साइबरपंक खेल सकते हैं. I enjoy both of these games. मतलब मैंने हॉगवर्ट्स नहीं खेली but I will enjoy cyberpunk for sure. Join a VC. What do you mean? नहीं, Shruti, fuck you. नहीं, I don't want to talk about music too much now. नहीं. I cannot, enter and get out quickly. Join a VC. मतलब? तो खुद तो है नहीं VC पे? So, yeah. Cyberpunk it is then? What do you guys say? इसमें गेम्स चेक करो. हैं? ओए what do you guys think about Detroit Become Human? बहुत पहले किसी ने रेकमेंड करी थी. मैं जॉफरी ने करी थी क्या? So this game is basically you play as multiple characters and your choices make the difference in the game. There are different storylines जो तुम choose करोगे. It's an interactive game. It's more basically. Peggy 18. मत खेलना. क्यों? Heavy Rain. Quantic Dream. Okay, I'll end the poll by the way. Detroit. This is where it all began. Jeffrey says, okay. The world's forge.
place where it all started. And it will all end. One error, and I came to life. I stepped out of the darkness, and I opened my eyes. First, there was the fear, the light, मैंने the थोड़ी बहुत noise, खेली है, the माइंडफक cold, तो नहीं है. I didn't find it to be and the mindfuck. fear again. So basically इसमें क्या होता है, रोबोट्स अलग अलग, जो कुछ रोबोट्स बेसिकली सेंटिएंट बन जाते हैं, राइट? They get conscious. This game is absolutely emotional. Walking Dead में तेरे को कोई एक पर्टिकुलर चीज़ है that you can point on why you hated it on the stream? ये मुरीज को स्पैम, एक और मुरीज को स्पैम कर रहा है. I don't know, dude. Abhilasha might be having a tech. Yeah, see, oh my god, dude. Oh my god. How? Oh my god. See, just fucking knew it. My audience ना खेलने वाले के लिए नहीं है. Oh, okay. The fucking timing. If I was just like 3 seconds late. मैं fucking back. चलो मैं जा रहा हूँ, भाग रहा हूँ, मैं मर गया, मैं मेरी कमर टूट गई है भैया, सच्ची. ऐसा कोई पता था? Am I that predictable? Yep. Actually, it's not about predictability. हर कोई चैट पे कुछ लिख रहा था, except for Lash. Who asked? अच्छा, हाई एंड ने पूछा था. ओके, बोरिंग लगी बस. आई डोंट नो क्यों. A game particularly के stream. It seems like you're talking about the game. टट्टी खा रहे शब्द. All right, let's talk linear games. Why Uncharted 4 is one of the best games I've ever played, and I'm more than willing to play this game again. You know, the ones that don't leave you wandering around for 50 hours questioning your entire existence before you actually find the main quest. These are the games that grab you by the face and say, sit down. Not the biggest fan of God of War. Shut up and enjoy this absolute roller coaster of a story. No side quests about every ridiculous situation thrown at him, falling off cliffs, crashing cars, dodging explosions, but unlucky because for some reason... Let's play this game, guys. Come on, even the story is good. People just refuse to let him retire. In this game, our boy Nate is chilling with his wife, finally living a normal life, when, bam, his long-lost brother Sam shows up like a debt collector, dragging him back into the treasure hunting business. And what follows is basically Indiana Jones, but with even better graphics and way more climbing. Seriously, I hope Nathan Drake's chiropractor is on speed dial, because this man spends half the game dang... Steven game, what she was saying, okay, it was the peak. I don't understand. Okay. I mean, you all can have different opinions, dude. एक तो ये 2025 में डैप करने वाले. From ledges by a single hand. The action sequences are insane. You're in a full-speed Jeep chase, jumping between trucks, fighting off mercenaries, and somehow not dying of a heart attack. But beyond all the chaos, the game's got heart. It's about family, regrets, and whether or not you might be for sneaking off to Pirate Islands. Spoiler, Elena पत्ते फेंक के मारूंगा. That's all I have in my hand right now. is a saint. Uncharted 4 is the perfect blend of action, humor, and how am I still alive moments. Let's see और कोई मुझे अगर इंटरेस्टिंग लग रही है तो. This is If you've ever Detroit. wanted to make extremely stressful life or death decisions while questioning whether AI will eventually replace us, Detroit Become Human is the game for you. This is basically an interactive sci-fi movie where your choices actually matter, like, oh no, I made one bad decision and now half the cast is dead, kind of matter. You play as 3 androids, Connor, the detective bot who is somehow both awkward and cool at the same time. Say you're right, you're right, dude. From housekeeper to revolution leader overnight, and Kara, who just wants to keep a kid safe in a world that is... You play as Amicia, a teenage girl trying to protect her little brother Hugo. ये game खेलनी है? Who, fun fact, has some seriously weird supernatural rat powers. The game is like The Last of Us, but with more medieval trauma and fewer zombies. You'll spend most of the time sneaking past murderous soldiers and praying to whatever 10 dates क्या है अब? gaming gods exist that the rats don't decide you look extra tasty today. Oh, and did I mention the rats hate light? Dating what? You're dating the AI again? Come on, dude. I've already had sex with the AI once. Not again.
सीफू तो नहीं, या तो साइबरपंक या अनचार्टेड 4। ओके, फिर जो हॉगवर्ट्स मैंने डाउनलोड करी उसका क्या करूँ? चलो अनचार्टेड 4 खेलते हैं। चैट, यू गाइस आर गुड विद अनचार्टेड 4? टेल मी क्विकली, अभी के अभी बताओ। Is all about revenge, chaos, and looking extremely cool while doing both. You can play as either Corvo or Fuck you, Emily, dude. and both have ridiculous supernatural powers that make you feel like an absolute. Yes, Uncharted 4 it is then. Okay. Ever think, man, I love cowboy games, but what if there were more vampires and even bigger explosions, sentient vacuums, and a deeply unsettling stuffed elephant situation? Expose a secret, water a plant. That last और one. Life is Strange मैंने देखी है, कभी खेली नहीं। We can play Life is Strange as well. ये कौन सी है? You're crafting arrows from dead animals, fighting bears with a knife, and just Lara generally Croft? proving she's tougher Yes, than all Tomb of us Raider. combined. The combat is smooth, the exploration is addictive, and the story is genuinely engaging. It's like Indiana Jones, but way more hardcore. Plus, you can spend hours just hunting and collecting resources like you're preparing for the apocalypse. If you haven't played this yet, fix your life immediately. Lara Croft deserves better from you. नहीं, Goat Simulator नहीं। नहीं, Goat Simulator नहीं। Like I want to be engaged in a story with you guys again. It's been a while. It's been a while. Like let's be engaged in a good story. So Uncharted 4 might be it. Yes, भी किसका मान रहे हो? जो गेम के नाम पे कैंडी क्रश कहती है। किसने? अच्छा लैश ने कहा था। नहीं, शुभदीप ने भी तो अनचार्टेड 4 या साइबरपंक का है। तो साइबरपंक में स्ट्रीम करना बोलना था नहीं। साइबरपंक में वो बहुत ज़्यादा है, साइड क्वेस्ट और ये सब। लेकिन अनचार्टेड 4 में लिनियर स्टोरी है, तो सबके लिए फॉलो करना आसान होगा। कल हम डिसाइड कर लेंगे टाइमिंग, और फिर मैं उस टाइम पे गेम रोज के रोज शुरू कर दिया करूँगा। It is very fun to play. It's very fun to watch. Uncharted 4 it is. यार साइबरपंक मेरे को भी बहुत पसंद है, लेकिन उसमें ना साइड क्वेस्ट बहुत ज़्यादा है, सो लोगों के लिए वो करना, फॉलो करना इज़ डिफ़िकल्ट साइबरपंक को। मतलब फॉर अ नॉट गेमिंग ऑडियंस, यू नो व्हाट आई मीन। चलो अनचार्टेड 4 इट इज़ देन। फक यू। तो कैंडी क्रश की बात कर रहा है, एक लिंक दबा के हैक हो जाती है। वीक में 2 डेज गेम, 1 दिन वॉच पार्टी, 4 दिन नॉर्मल स्ट्रीम। मर जाऊँ मैं, मर ही जाऊँ, और कुछ ना करूँ जिंदगी में। चलो अल फक ऑफ। ठीक है, कल मिलते हैं गाइस। कल खेलनी है अनचार्टेड 4? जल्दी बताओ, कल से शुरू करनी है क्या? एक दिन लाइव वायरल स्ट्रीम। मारो भाई मारो मुझे, जब आप ठीक हो जाओ तब। अब मैं यार गेम खेलने के लिए तो मैं कभी भी, किस दिन कार्ड डिटेल्स भी बता देगी। कल नहीं, नेक्स्ट वीक मंडे। ठीक है, मंडे से फिर मैं क्या करूँगा, मैं 10:30 बजे लाइव आऊँगा और 11 बजे से गेम स्टार्ट हो जाएगी, राइट? अनचार्टेड 4। तो कैसे हैक हुई फिर तो लैश? एक दिन मसाज स्ट्रीम। आई नीड अ मसाज डूड। Did I tell you guys how I accidentally went into a massage parlor and got some services which were not what I went in for? I mean, it would be unfair to completely to say that. एक तो 2 सीन और ऐड कर लो। क्या मतलब? I don't know, दोस्त बकचोदी कर रहा था कोई रैंडम कौन। So you were literally watching some con, and that's how you got hacked. That's the worst way to get hacked, from a porn site. I've never been hacked. I've watched all the weird kind of porn there is, trust me, and I still do. And I've never been hacked from a porn site. Oh, how could you get hacked from a porn? That's the worst thing. That's the worst way to get hacked. You know, one of my friends told me a really dark. He started telling me that, "Bhai, I saw something really dark," and I know it wasn't that bad. I mean, I can watch some dark shit. He was telling me, and he was like, "I saw something really dark." और वो धीरे धीरे explain करने लगा what he was watching, and it was like really, really, really dark.
Okay, and it was getting dark and dark and dark, and वो मुझे details बताया जा रहा था. And as he was telling me the details, it dawned upon me, I don't think he was watching Con. I think he was just watching something else, something which is not legal. I think he just was watching that, and he was watching that on a porn site, and he thought he was just watching porn. I don't think that was porn. I won't go into any more details. Lash, you plead the fifth. Is that what they say? मेरे को नहीं पता. Like, अच्छा एक सेकंड, what do you mean कि मैं क्लास के बीच में कौन क्यों देखूंगी? वो बंदा क्लास के बीच में कौन क्यों खोलेगा? There's only one reason why one person opens a porn site, because they want to watch porn. But it's fine. It's okay. Missed. Sorry. Lash, I've never shocked that true. OBS में 2 scene add कर लो stream starting and ending के. कर लूँ? Okay. I also something disturbing, but it didn't disturb me ज़्यादा. But we see लोग किस extent तक जाते हैं to fulfill fantasies. Well, you already watch like a lot of disturbing shit on Reddit, right? So you are somewhat numb to it. It was his idea for a prank. Fucking child. I won't tell you, but not sure. Not today, because I really need to run क्योंकि मुझे बहुत तेज washroom जाना है. So I don't want to just. If you want me not to take it seriously, you just say it, and I can be like, oh, all right. Then you can tell me right now, it's fine. But if you want me to have a discussion about it, then no, not right now. I do wonder what it means. How we get numb to whatever the fuck. कल बताइए नहीं तो DM, alright. Uncharted 4 के साथ हम Lost Legacy भी खेल सकते हैं भाई. Steam पे $50 की Uncharted 4 अभी भी भैंस की आँख. A guy had his throat slit by another guy while he was checking out. So like slit as in what? He died from it? Tomb Raider खेला. पलटो मत. I think Uncharted is better than Tomb Raider though. I like masochism is a thing. I understand masochism. Have some rest. कमर टूट जाएगी. कमर मेरी सच में टूटी पड़ी है. पता नहीं क्यों. कमर तोड़ performance. I don't know what that means. Why the fuck do I feel so much pain in my lower back? Well, it was quick. Okay, but he did die. All right. Far Cry 4. In future, yes. Far Cry 4 we can play in future. Oh, he died. All right. Missed. क्या मिस करा? एक बार 2 बंदर बेड पर बैठे थे. लड़के ने बेल्ट निकालते हुए लड़की को बेल्ट मार दी गलती से. Fuck you, dude. अच्छा बंदे लिखा है. बंदे बेड पे नहीं बैठे थे. एक बंदा था, एक लड़की थी उनमें से, एंड वो लड़का बेल्ट उतार रहा था एंड इट एक्सीडेंटली हिट हर राइट ऑन हर बट एंड द गाय वेंट लाइक एंड आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली क्या बात हो रही थी, बट आई डोंट नो व्हाई आई सेड, वेल I'm a man with a plan, and I ripped the belt off and and I'm like, huh? And she was like, man with a plan. Kinda. It was an accident, Malika, and screw you. You guys are not supposed to talk about it. क्या बातें हो रही हैं तो बताओ. मैं मुक्का मारूंगा इसे. I was watching his dick के इतना blood loss हुआ तो whether he'll lose erection or not. Oh, okay. Oh, my fucking lower back, dude. Oh my god, what is happening to me? Oof. Is it just old age? Is that what it is? What हो रहा है? Right? Fucking hell, dude.
बुड्ढे हैं आप. Well, first of all, you're a therapist. You should be more considerate before saying horrible stuff like this, Lash. Okay? You're doing a master's and you make a noob mistake like that? Really, Lash? Really? Oh. Let the music play. Oh, and guess what? We didn't even do anything. अभी नहीं हो therapist. Well, you're never gonna learn. You keep making these mistakes. मैं जब रुका ना वो इसलिए रुका because you're never gonna learn. जब मैंने बोला ना, I was like that was too animated. Why would I say it like that? अरे VC में गेम्स देख लेना, कम्युनिटी गेम होती हैं. ओह ओके 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 ओके. देखा 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 देखा, मुझे पता था. हाँ, अभी सैनिटी बची है. लैश डिक्सॉड. शुभदीप शुभदीप तू गाने सुनना चाहता है तो सुन ले. मुझे वॉशरूम जाना है. या तो मैंने ये लेना है. अच्छा चलो मैं जा रहा हूँ. बाय बाय. मंडे से गेम खेल रहे हैं हम. हाँ, बहुत देर से मुझे वॉशरूम जाना है. मेरी फीड पे भी अच्छी रील्स नहीं आती आजकल. नंगे लड़के आते हैं बस. बेटा जो तुम देखोगे वही तो दिखेगा ना, गंदे बच्चे. 1 घंटा और बैठेगा अगर प्ले कर दिया तो. एग्जैक्टली. नहीं नहीं नहीं, ऐसा करके नहीं आऊँगा. अरे भाई और भी तो काम है ना. पानी पी लिया आपने? थैंक्स फॉर द रिमाइंडर. आई शुड ड्रिंक सम वाटर. स्ट्रीम क्यों मत करनी है? अरे यार, आई डोंट वांट टू स्ट्रीम फॉर टू लॉन्ग, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा लंबे टाइम तक स्ट्रीम करता हूँ देन आई फील लाइक आई डोंट हैव द एनर्जी और टाइम टू डू अदर थिंग्स. भाई 4-5 घंटे स्ट्रीम करता हूँ. इट्स एक्चुअली टायरिंग. आई एम नॉट किडिंग. Thanks for the reminder, Lash. Wait, hold on. Were you being coy? Ooh. चलो मैं सच जा रहा हूँ. ओके बाय बाय. ठीक है. तेरी फीड में भी नंगे लड़के आ रहे हैं फार्थ. मेरे में तो ना नंगे लड़के आते ना नंगी लड़के आते. मेरे फीड में क्या आ रहा है? Feed, so explore page. It's a lot of bike shit because I've been watching the bike shit. It's a lot of bike shit. It's Norm Macdonald, the best comedian to have ever lived. And yeah, that's about it. See? Oh, I just don't want to reveal anything accidentally. Actually, what's happening? See, now that makes me question it. Lash. शुद्धी को क्यों भेज रहे नंगे लड़के? लाइक वो हस्ता मिथुन नहीं करना चाहता भाई. वो छोड़ रहा है ये सब. बाकी दुनिया मेरी अच्छी नहीं देख पा रही. चलो I'll fuck off. I really need to go now. Take care guys. Thanks for joining the stream. Remember, Dave D Watch Party Saturday को शाम को 7 बजे Discord पर ज्वाइन कर लेना, वरना you will never see me take this sock off. I'll keep it on forever. I'll never take it off. ये जो रंग बिरंगी my favorite sock. I'll never take it off. So join Discord पे वॉच पार्टी सैटरडे शाम को 7 बजे DVD. एंड मंडे से हम
शुरू कर रहे हैं अनचार्टेड 4 का प्ले थ्रू। तो 10:30 बजे। ओके, मैचिंग अंडरवेयर ले ले। व्हाट डू आई हैव अ पैटर्न्ड बॉक्सर काइंड ऑफ। चलो, good night, bye bye, thanks for reminding me, bye bye, fuck off y'all.